और मैंने सुबह ये कहा था कि मतलब we still can reach 2 out of every 3 Indians. And I want to tell you, Pradhan Mantri ji, that this has started 7 years back from a very small co-sharing space of 500 square feet in a private mill in Mumbai with me and only 2 or 3 believers in me. और प्रधानमंत्री जी, हर भारतीय के पास हमेशा सपने थे, हर भारतीय परिश्रम करता था, लेकिन आपके आने के बाद ऐसा माहौल, ऐसी पॉजिटिव एनर्जी मिली जो आपने तैयार की है. And I have no hesitation in saying this, that it is because of the environment that you have created that companies and dreams like Republic can come to life and become a reality. And we are very grateful to you because all that we had a dream, Pradhan Mantri ji, was a dream of professionals who believe they can get the job done. आपके विजन और आपके लीडरशिप ने ऐसा माहौल बनाया इस देश में जिसमें पहला तो लेवल प्लेइंग फील्ड मिली है, सेकंड एक पॉजिटिव इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट मिली है, और थर्ड एक प्रोटेक्टिव इकोसिस्टम मिली है which keeps भारतीय ड्रीम्स सिक्योर इन एन एनवायरनमेंट ऑफ इकोनॉमिक स्टेबिलिटी. प्रधानमंत्री जी, 10 साल में आपने एक बिलीफ सिस्टम बनाई है इस देश में. आपने एक बिलीफ सिस्टम खड़ा किया है जिसमें एक स्टार्टअप, और रिपब्लिक बिल्कुल एक स्टार्टअप है, और ये अमेरिका में नहीं हो सकता है 7 सालों में. प्रधानमंत्री जी, इट कैन हैपन ओनली इन इंडिया, एंड अंडर योर ओवरऑल विजन. And Pradhan Mantri ji, the most important thing about your belief system, which matters to me personally, matters to everybody at Republic and everybody here, जिसके बारे में ज़्यादा बात नहीं होती, it is because your belief system is based on high ethics, naitikta, which is at the core of it. And I remember that in India, people used to say that people with ethics, people with ideals, and idealism can never get far. It is because of your vision and your leadership that ethics are today the baseline of success in this country. चाहे राजनीति हो, चाहे कॉर्पोरेट कल्चर हो, चाहे मीडिया हो, एथिक्स, नैतिकता के जरिए सफलता की सीढ़ी चढ़ी जा सकती है. This is what we have personally benefited from. प्रधानमंत्री जी, आपके विजन से हम प्रेरणा लेते हैं. अभी हमारा लक्ष्य है कि हर साल एक रीजनल लैंग्वेज में एक चैनल लॉन्च करना चाहते हैं. हमारे पास उतनी पूंजी नहीं है, अगर हो सके तो हम 2 लॉन्च करेंगे. एंड आई वांट टू शेयर विथ यू दैट दिस गोल ऑफ रिपब्लिक, प्रधानमंत्री जी, इज नॉट बैक्ड बाय एनी फॉरेन मनी, फॉरेन इन्वेस्टमेंट. आई टेल यू फ्रैंकली, there is not 0.00001% foreign investment in this company. I can tell you it is the purely Swadeshi company from the soil of India, Pradhan. हमारी एसेट सिर्फ हमारा मेहनत है, क्योंकि at a personal level, जैसे परिवार से हम आते हैं, जिस परिवार से मैं आता हूँ, my mother who is in the audience here, she's been a school teacher. My father was an army officer. हम मध्यम वर्गीय परिवार से आते हैं, हम कोई डायनेस्ट नहीं है, और हमने अपने करियर के पहले दशक में अपने सपने को टूटते हुए भी देखा है अलग सिस्टम के अंदर. अभी जो माहौल है, द सेंस ऑफ स्टेबिलिटी दैट यू हैव गिवन हैज चेंज्ड एवरीथिंग. और प्रधानमंत्री जी, आई वांट टू शेयर समथिंग विथ यू व्हिच आई वाज वेटिंग टिल टुडे टू टेल यू. आपने कहा क्या हो रहा है, तो मैं उस समय बोल नहीं पाया, तो मैं आपको स्टेज से कह रहा हूं. प्रधानमंत्री जी, जितना संघर्ष हुआ रिपब्लिक का, जितनी कठिनाई से हम आए, आप सब जानते हैं, मगर सच्चाई के साथ हम बढ़ रहे हैं, मुश्किलें हम पार कर रहे हैं. एंड इट इज दिस कॉन्करिंग ऑफ स्ट्रगल, प्रधानमंत्री जी, फ्रॉम दिस हॉल, 25 किलोमीटर्स फ्रॉम दिस हॉल, प्रधानमंत्री जी, सिर्फ 25 किलोमीटर दूर, आई एम प्राउड टू शेयर विथ यू, प्रधानमंत्री जी, दैट द रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क is building and is almost completing the building of the largest news complex network and studio in Asia. And I have no hesitation in saying I am inspired by you, because you may not remember, Pradhan Mantri ji, but 7-8 years back you said
that India needs a global media. और आपने कहा था ये सिर्फ सरकार का काम नहीं है, कोई entrepreneur इंडिया से करे, and we have taken upon the challenge. That center, I hope and pray that one day you will visit our news center. My dream is to set up within 1 year, 1.5 years, Pradhan Mantri ji, the first global news organization from the soil of India, operating from New Delhi, from the national capital region. Finally, Pradhan Mantri ji, the theme of the summit is Bharat the next decade. लेकिन मैं एक और कदम बढ़कर कहूंगा कि आने वाले दशक जो है वो भारत का है, हर भारतीय के लिए विकसित भारत एक लक्ष्य है. आपने रेड फोर्ट से कहा था, वहां से it really went into our hearts. People are believing it, and the belief makes things happen. Everybody is talking about it today. Everybody believes it. In fact, I'll tell you, Pradhan Mantri ji, you have set a target of 2047. But I'm sure today you were in Kashmir. I congratulate you for your Kashmir visit. I'm sure you believe. I'm sure. 2 days back, I saw the video of you in Bengal, Pradhan Mantri ji. We run one of the big channels, the Republic Bangla. We saw how people were lined up. We saw the people were responding to you. So I believe that in this country, every Indian has absorbed the idea of Viksit Bharat. And our commitment to you is, we will not even believe in 2047, Pradhan Mantri ji. If all of us come together, then I believe that we can do it even earlier. Your vision is our vision. Your vision is the vision of 1.4 billion Indians. And what they say about pro-incumbency, I am not a psephologist. I don't believe in psephology, Pradhan Mantri ji. But I'll tell you one thing. Pro-incumbency for me, as a citizen of India, is when I see things happen in my lifetime, in our parents' lifetime, in our children's lifetime. We are seeing the changes. It is not a far-off dream. We are seeing what is happening in the next half decade, in the next decade, and it is all because of your hard work and your vision. And therefore, I feel proud to invite you. I feel overwhelmed that you've come for my event. And Pradhan Mantri ji, I invite you to take the stage today and inspire all of us who have been waiting since morning with your vision, so that this message goes out to every Indian. I am again very grateful to you that you have come. Thank you, Pradhan Mantri. Thank you. Thank you. आप सबको नमस्कार. रिपब्लिक टीम के भी मेरी तरफ से विशेष इस समिट के लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं. और मैं मानता हूं कि अर्नब ने जो बताया, वो दिन भर जो मंथन चला होगा उसी में से निकला होगा. और मैं आने से पहले पानी इसलिए पिया, इतना सारा मैं पचा पाऊंगा कि नहीं पचा पाऊंगा. कुछ साल पहले जब मैंने कहा था कि ये दशक भारत का है, अब जब हम पॉलिटिकल लोग बोलते हैं तो लोग यही मानते हैं कि ये तो पॉलिटिकल स्टेटमेंट है, राजनेता तो बोलते रहते हैं. लेकिन ये भी सच्चाई है, आज दुनिया ये कह रही है ये दशक भारत का है. और मुझे खुशी है कि आपने एक कदम और आगे बढ़कर अब भारत
द नेक्स्ट डेकेड फॉर चर्चा शुरू कर दी है। ये दशक विकसित भारत के सपनों को पूरा करने का एक अहम दशक है और मैं मानता हूं कि जो भी जिसको इन्फ्लुएंस कर सकता है, कोई भी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी हो, कितने ही ऑपोजिशन ख्याल रखते हो, लेकिन ये कहने में क्या जाता है कि भाई ये 10 साल काम करने जैसे हैं, उसमें क्या जाता है। लेकिन कुछ लोग इतनी निराशा की गर्त में डूबे हुए हैं कि उनके लिए न ये सोचना, न ये सुनना और न ही ये बोलना बड़ा मुश्किल हो गया है। कुछ लोग खास हंसी शेयर कर रहे हैं। तो स्वाभाविक है कि मेरी बात सही जगह पे पहुंच गई है। लेकिन मैं मानता हूं कि ऐसे विषयों पर चर्चा भी बहुत आवश्यक है, मंथन भी बहुत आवश्यक है। लेकिन साथियों, जिस दशक में हम अभी हैं, जो दशक अभी गुजर रहा है, मैं समझता हूं वो आजाद भारत का अब तक का सबसे इंपॉर्टेंट डेकेड है और इसलिए ही लाल किले से मैंने कहा था, यही समय है, सही समय है। ये दशक एक सक्षम, समर्थ और विकसित भारत बनाने की नींव को मजबूत करने वाला डेकेड है। ये दशक उन आकांक्षाओं को, एस्पिरेशंस को पूरा करने का है जो कभी भारत के लोगों को असंभव लगती थी। एक मेंटल बैरियर तोड़ना बहुत जरूरी है। ये दशक भारत के सपनों को, भारत के सामर्थ्य से पूरा करने का दशक होगा। और मैं ये वाक्य बड़ा महत्वपूर्ण रूप बोल रहा हूं, सपने भारत के, सामर्थ्य भी भारत का। अगला दशक शुरू होने से पहले हम भारत को विश्व की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनते देखेंगे। अगला दशक शुरू होने से पहले भारतीयों के पास घर, शौचालय, गैस, बिजली, पानी, इंटरनेट, सड़क, हर बुनियादी सुविधाएं उसके पास होगी। ये दशक भारत में वर्ल्ड क्लास एक्सप्रेसवे, हाई स्पीड ट्रेन, देशव्यापी वाटरवेज नेटवर्क, ऐसी अनेक इंफ्रास्ट्रक्चर की आधुनिकतम चीजों के निर्माण का दशक होगा। इसी दशक में भारत को अपनी पहली बुलेट ट्रेन मिलेगी। इसी दशक में भारत को फुल्ली ऑपरेशनल डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स मिलेंगे। इसी दशक में भारत के बड़े शहर या तो मेट्रो या नमो भारत रेल के नेटवर्क से जुड़ चुके होंगे। यानी ये दशक भारत की हाई स्पीड कनेक्टिविटी, हाई स्पीड मोबिलिटी
और हाई स्पीड प्रॉस्पेरिटी का दशक होगा। साथियों, आप भी जानते हैं कि ये समय वैश्विक अनिश्चितताओं और अस्थिरता का समय है और एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ये सबसे अधिक अस्थिर समय अनुभव हो रहा है। उसकी तीव्रता भी और उसका स्प्रेड भी। पूरी दुनिया में कई सरकारों को सत्ता विरोधी लहर का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन इन सब के बीच भारत एक सशक्त लोकतंत्र के रूप में विश्वास की किरण बना हुआ है। मैं आशा की किरण नहीं कह रहा हूं, मैं विश्वास की किरण बहुत जिम्मेवारी के साथ बोल रहा हूं। और ये स्थितियां तब है जब हमने देश में बहुत सारे रिफॉर्म्स भी किए हैं। भारत ने ये साबित किया है कि गुड इकोनॉमिक्स के साथ ही गुड पॉलिटिक्स भी हो सकती है। साथियों, आज एक वैश्विक जिज्ञासा, ग्लोबल क्यूरियोसिटी है कि भारत ने ये कैसे किया। ये इसलिए हुआ क्योंकि हमेशा सिक्के के किसी भी पहलू को नजरअंदाज नहीं किया। ये इसलिए हुआ क्योंकि हमने देश की जरूरतें भी पूरी की और सपने भी पूरे किए। ये इसलिए हुआ क्योंकि हमने समृद्धि पर भी ध्यान दिया और सशक्तिकरण पर भी काम किया। जैसे हमने कॉरपोरेट टैक्स में रिकॉर्ड कमी की, लेकिन हमने ये भी सुनिश्चित किया कि पर्सनल इनकम पर भी टैक्स कम से कम हो। आज हम हाईवे, रेलवे, एयरवे, वाटरवे के निर्माण पर रिकॉर्ड इन्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन साथ ही हम गरीबों के लिए करोड़ों घर भी बनवा रहे हैं। उन्हें मुफ्त इलाज, मुफ्त राशन की सुविधा दे रहे हैं। हमने मेक इन इंडिया की पीएलआई स्कीम्स में छूट दी तो किसानों को बीमा से सुरक्षा और आय बढ़ाने के साधन भी दिए हैं। हम टेक्नोलॉजी और इनोवेशन पर बड़ा इन्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ हमने युवाओं के स्किल डेवलपमेंट पर भी हजारों करोड़ रुपए खर्च किए हैं। साथियों, आजादी के बाद के दशकों में भारत का बहुत समय उसे गलत दिशा में ले जाने में गंवा दिया गया। एक ही परिवार पर फोकस की वजह से देश का विकास डिफोकस हो गया। मैं इसके विस्तार में नहीं जाना चाहता, लेकिन आप भी ये मानेंगे कि विकसित भारत बनाने के लिए हमने अपने खोए हुए समय को भी रिकवर करना होगा। इसके लिए अभूतपूर्व स्केल और अभूतपूर्व स्पीड पर काम करना होगा। आज आप भारत में हर तरफ यही होता देख रहे होंगे। मैं जब गुजरात में था तो मैं उस समय पब्लिकली चुनौती देता था कि किसी भी दिशा में 25 किलोमीटर जाइए,
आपको कोई न कोई डेवलपमेंट का, इंफ्रास्ट्रक्चर का काम चलता हुआ नजर आएगा। किसी भी दिशा में 25 किलोमीटर कहीं से भी शुरू करो। मैं आज किलोमीटर की भाषा नहीं बोल रहा हूं, लेकिन मैं आज कह सकता हूं कि आप हिंदुस्तान के किसी भी क्षेत्र में आप अगर नजर करेंगे, कुछ न कुछ पहले से अच्छा हो रहा है। और आप लोग भले इस पर डिबेट कर रहे हैं कि तीसरे टर्म में बीजेपी को 370 से कितनी ज्यादा सीटें मिलेगी। मैं भी तो आप लोगों के बीच में रहता हूं ना। लेकिन मेरा पूरा ध्यान देश के विकास की स्पीड और स्केल पर को और बढ़ाने पर ही लगा हुआ है। अगर मैं सिर्फ 75 दिन का हिसाब दूं आपको, सिर्फ 75 दिन की बात करूं, 75 डेज, तो रिपब्लिक के दर्शक भी हैरान हो जाएंगे, और मैं पक्का मानता हूं हैरान हो जाएंगे। यहां कुछ लोग नहीं होंगे। देश में किस स्पीड पर काम हो रहा है। पिछले 75 डेज में मैंने करीब करीब 9 लाख करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट का शिलान्यास और लोकार्पण किया है। ये $110 बिलियन से भी ज्यादा होता है। दुनिया के कितने ही देशों का ये साल भर का खर्च भी नहीं है, और हमने सिर्फ 75 डेज में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर इससे ज्यादा इन्वेस्ट कर दिया है। पिछले 75 दिन में देश में 7 नए एम्स का लोकार्पण हुआ है, 4 मेडिकल और नर्सिंग कॉलेज, 6 नेशनल रिसर्च लैब शुरू हुई है, 3 IIM, 10 IIT, 5 NIT के परमानेंट कैंपस या उनसे जुड़ी सुविधाओं का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है, 3 IIIT, 2 ICR और 10 सेंट्रल इंस्टीट्यूट का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है। स्पेस इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी 1800 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण किया गया है। इन्हीं 75 दिनों में 55 पावर प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन या शिलान्यास हुआ है। काकरा पार परमाणु ऊर्जा प्लांट के 2 नए रिएक्टर राष्ट्र को समर्पित किए गए हैं। कल्पकम में स्वदेशी फास्ट ब्रीडर रिएक्टर की कोर लोडिंग की शुरुआत हुई है, और ये एक बहुत बड़ा रिवॉल्यूशनरी काम है। तेलंगाना में 1600 मेगावाट के थर्मल पावर प्लांट का लोकार्पण हुआ है। झारखंड में 1300 मेगावाट के थर्मल पावर प्लांट का लोकार्पण हुआ है। यूपी में 1600 मेगावाट के थर्मल पावर प्लांट का शिलान्यास हुआ है। यूपी में ही 300 मेगावाट के सोलर पावर प्लांट का शिलान्यास हुआ है। इसी कालखंड में यूपी में ही अल्ट्रा मेगा रिन्यूएबल पार्क का भी शिलान्यास हुआ है। हिमाचल में हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का शिलान्यास हुआ है। तमिलनाडु में देश के पहले ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल वेसल को लॉन्च किया गया है। यूपी के मेरठ सिंभावली ट्रांसमिशन लाइन्स का उद्घाटन हुआ है। कर्नाटका के कोप्पल में विंड एनर्जी जोन के ट्रांसमिशन लाइसेंस का उद्घाटन किया गया है। इन्हीं 75 दिनों में भारत के सबसे लंबे केबल आधारित ब्रिज का लोकार्पण हुआ है। लक्षद्वीप तक अंडर सी ऑप्टिकल केबल के काम को लोकार्पण करके पूरा करके लोकार्पण किया गया है। देश के 550 से ज्यादा रेलवे स्टेशनों को आधुनिक बनाने का काम शुरू हुआ है। 33 नई ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई गई है।
रोड, ओवरब्रिज, अंडरपास की 1500 से ज्यादा परियोजनाओं का शुभारंभ हुआ है। देश के 4 शहरों में मेट्रो से जुड़ी 7 परियोजनाओं का लोकार्पण किया गया है। कोलकाता को देश के पहले अंडर वाटर मेट्रो की सौगात मिली है। पोर्ट डेवलपमेंट की 10,000 करोड़ रुपए की 30 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है। पिछले 75 दिनों में ही किसानों के लिए दुनिया की सबसे बड़ी स्टोरेज स्कीम शुरू हुई है। 18,000 कोऑपरेटिव के कंप्यूटराइजेशन के काम को पूरा कर दिया गया है। किसानों के बैंक खातों में 21,000 करोड़ रुपए से ज्यादा ट्रांसफर हुए हैं। और रिपब्लिक टीवी के दर्शकों को मैं याद दिला दूं कि ये वो प्रोजेक्ट हैं जिसमें मैं शामिल रहा हूं। और ये मैंने सिर्फ शिलान्यास और लोकार्पण की बात की, और भी तो बहुत कुछ किया है, वो मैं नहीं बता रहा हूं। इसके अलावा मेरे सरकार के बाकी मंत्री, बीजेपी एनडीए की दूसरी सरकारों की लिस्ट अगर मैं बोलता जाऊंगा तो मैं नहीं मानता हूं आप सुबह की चाय का इंतजाम किया है कि नहीं किया है। लेकिन मैं एक और एग्जाम्पल दूंगा कि हमारी सरकार की स्पीड क्या है, कैसे काम कर रही है। आप भी जानते हैं कि इस साल के बजट में, यानी बजट तो अभी अभी गया है, इस साल के बजट में सोलर पावर से जुड़ी एक बड़ी योजना की घोषणा की गई थी। बजट की घोषणा के बाद पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना को कैबिनेट से मंजूरी देने में, लॉन्च करने में 4 सप्ताह से भी कम का समय गया है। अब तो 1 करोड़ घरों को सूर्य घर बनाने के लिए सर्वे भी शुरू हो गया है। इस योजना के तहत सरकार की तैयारी 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने और अतिरिक्त सोलर यूनिट से लोगों को कमाई करवाने की भी है। आज देशवासी हमारी सरकार की स्पीड और स्केल को अपनी आंखों से देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, और इसलिए ही वो कह रहे हैं एक बार फिर एक बार। साथियों, अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि आपके खिलाफ इतनी नेगेटिव कैंपेन चलाई जाती है, इतने हमले होते हैं, आपको फर्क नहीं पड़ता क्या? मैं उनको यही बोलता हूं कि अगर मैं इस नेगेटिव कैंपेन पर ध्यान देने लग गया तो फिर मुझे जो काम करने हो रह जाएंगे। मैंने 75 दिन का रिपोर्ट कार्ड आपके सामने रखा है, लेकिन साथ ही मैं अगले 25 साल का रोड मैप भी लेकर चल रहा हूं। और मेरे लिए एक एक सेकंड कीमती है। इस चुनावी माहौल में भी हम अपने कामकाज को लेकर जनता के पास जा रहे हैं। दूसरी तरफ क्या है? दूसरी तरफ गुस्सा है, गालियां है, निराशा है। इनके पास ना मुद्दा है और न कोई समाधान है। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए है क्योंकि इन पार्टियों ने 7 दशक तक सिर्फ स्लोगन्स पर चुनाव लड़ा। ये लोग गरीबी हटाओ कहते रहे, ये स्लोगन से उनकी सच्चाई है। बीते 10 साल में लोगों ने स्लोगन्स नहीं, सॉल्यूशंस देखे हैं। खाद्य सुरक्षा हो या खाद कारखानों को फिर से शुरू करना हो,
लोगों को बिजली देनी हो या बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना हो, लोगों के लिए आवास योजना बनाने से लेकर आर्टिकल 370 को हटाने तक हमारी सरकार ने सारी प्राथमिकताओं को एक साथ लेकर काम किया है। साथियों, रिपब्लिक टीवी का सवालों के साथ बहुत पुराना रिश्ता रहा है। नेशन वांट्स टू नो। और ये कहते कहते आप लोग अच्छों के पसीने छुड़ा दिए हैं। पहले देश में सवाल होता था कि आज देश कहां है, देश किस हालत में है। लेकिन देखिए, बीते 10 वर्षों में ये सवाल कैसे बदल गए हैं। 10 साल पहले लोग बोलते थे, हमारी इकोनॉमी का अब क्या होगा। आज लोग पूछते हैं, हम कितनी जल्दी तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनेंगे। 10 साल पहले लोग बोलते थे, हमारे पास ये विकसित देशों वाली टेक्नोलॉजी कब आएगी। आज लोग विदेशों से आने वालों से पूछते हैं, आपके यहां डिजिटल पेमेंट नहीं होता है क्या। 10 साल पहले लोग नौजवानों से कहते थे, नौकरी नहीं मिलेगी तो क्या करोगे। आज लोग नौजवानों से पूछते हैं, तुम्हारा स्टार्टअप कैसा चल रहा है। 10 साल पहले एनालिस्ट पूछते थे, इतनी महंगाई क्यों है। आज यही लोग पूछते हैं, पूरी दुनिया के संकट के बाद भी भारत में महंगाई नियंत्रण कैसे है। 10 साल पहले पूछा जाता था, विकास क्यों नहीं हो रहा। आज पूछा जाता है, आखिर हम इतनी तेजी से विकास कर कैसे रहे हैं। पहले लोग पूछते थे, अब कौन सा घोटाला निकला। आज पूछा जाता है, अब कौन से घोटालेबाज पर कार्रवाई हुई। पहले मीडिया के साथी पूछते थे, कहां है बिग बैंग रिफॉर्म्स। आज पूछा जाता है, इलेक्शन टाइम बजट में भी रिफॉर्म्स कैसे आ रहे हैं। 10 साल पहले लोग पूछते थे, जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 कभी खत्म होगा क्या। आज पूछा जाता है, कश्मीर में कितने पर्यटक आए, कश्मीर में कितना निवेश आया। वैसे मैं आज सुबह ही श्रीनगर में था, अनेकों नई परियोजनाओं का शिलान्यास करके और लोकार्पण करके आया हूं। और आज नजारा ही कुछ और था दोस्तों। 40 साल से मेरा उस धरती से नाता रहा है। आज मैंने अलग मिजाज देखा, अलग रूप देखा, सपने देखे, आत्मविश्वास से भरे हुए लोग देखे हैं मैंने। साथियों, दशकों तक सरकारों ने जिन्हें कमजोर मानकर, लायबिलिटी मानकर छोड़ दिया, इन 10 वर्षों में हमने उनकी जिम्मेदारी लेने का काम किया है। इसलिए मैं कहता हूं, जिसका कोई नहीं, मोदी उसके साथ खड़ा है। आप एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट का उदाहरण लीजिए। वर्षों तक इन जिलों को, यहां रहने वाले करोड़ों देशवासियों को पिछड़ा बताकर भाग्य के भरोसे छोड़ दिया गया था। ये पिछड़ा इलाका है। हमारी सरकार ने ना सिर्फ सोच बदली, बल्कि अप्रोच भी बदला और साथ साथ उनका भाग्य भी बदला। इसी तरह हमारे बॉर्डर किनारे के जिले और वहां के रहने वालों की भी जिंदगी थी। पहले की सरकारों की नीति थी कि सीमा से सटे इलाकों का विकास ना हो। ऑफिशियल कहते थे, विकास ना हो।
इस नीति के कारण वहां रहने वाले लोगों को भी परेशानी होती थी, पलायन होता था। हमने वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम शुरू किया जिससे कि लोग सशक्त हो और इलाकों की स्थितियां बदले। दिव्यांगों का उदाहरण देखिए, वर्षों तक इन पर किसी ने ध्यान नहीं दिया क्योंकि ये वोट बैंक नहीं थे। हमने ना सिर्फ दिव्यांगों को हर क्षेत्र में प्राथमिकता दी बल्कि लोगों की सोच भी बदली। आप हैरान हो जाएंगे जी, मैं कहूंगा ये ऑडियंस को तो शायद बेचैनी हो जाएगी। हमारे यहाँ राज्यों में लैंग्वेज अपने अपने तरीके से विकसित हुई, विविधता है, गर्व का विषय है। लेकिन हमारे जो स्पेशली एबल्ड लोग हैं, जिनको सुनने बोलने की दिक्कत है, उनके लिए साइनेजेस की जरूरत होती है। आप हैरान होंगे, हमारे देश में साइनेजेस भी अलग अलग प्रकार के चलते थे। अब मुझे बताइए कि दिल्ली का आदमी जयपुर जाए और सामने वाला दूसरी साइनेजेस से बात करेगा तो क्या होगा उसका? आजादी के इतने सालों के बाद मैंने उस काम को किया, कमेटी बिठाई और आज पूरे देश में मेरे दिव्यांग जनों के लिए एक ही प्रकार के साइनेजेस पढ़ाए जाते हैं। बात छोटी लगेगी लोगों, लेकिन जब एक संवेदनशील सरकार होती है ना, तब उसकी सोच, उसका अप्रोच जमीन से जुड़ा हुआ होता है, जड़ों से जुड़ा हुआ होता है और जनों से जुड़ा हुआ होता है। और देखिए, दिव्यांगों के प्रति आज समाज का नजरिया बदला है। पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण तक दिव्यांगों के हिसाब से अब बनना, आर्किटेक्चर्स जो होते हैं वो भी डिजाइन करते समय दिव्यांग के लिए बना करके ले आ रहा है। ऐसे कितने ही स्पेशल ग्रुप और कम्युनिटीज है जिन्हें आजादी के बाद से कोई महत्व नहीं दिया गया। हमने ऐसी गुमंतु जनजातियों के लिए स्पेशल वेलफेयर बोर्ड बनाया। किसी ने भी हमारे लाखों रेहड़ी पटरी वाले दुकानदारों के बारे में नहीं सोचा, लेकिन कोरोना के समय हमारी सरकार ने इनके लिए पीएम स्वनिधि योजना बनाई। किसी ने भी हमारे उन स्किल्ड कलाकारों की परवाह नहीं की जिन्हें आज हम विश्वकर्मा कहते हैं। हमने ये सुनिश्चित किया कि इस वर्ग को स्किलिंग से फंडिंग तक किसी चीज की दिक्कत ना आए। इस पर केंद्र सरकार अब 13,000 करोड़ रुपए खर्च कर रही है। साथियों, रिपब्लिक टीवी की टीम जानती है कि हर उपलब्धि के पीछे मेहनत, विजन और संकल्पों की एक लंबी यात्रा होती है, जो अभी अर्नब ने भी थोड़ा बहुत ट्रेलर दिखाया हमको। भारत भी अपनी इस यात्रा में तेज गति से आगे बढ़ रहा है। अगले डेकेड में भारत जिस ऊंचाई पर होगा वो अभूतपूर्व होगी, अकल्पनीय होगी। और ये भी मोदी की गारंटी है। साथियों, मुझे अच्छा लगा आप भी एक ग्लोबल विजन को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं, तो मुझे पक्का विश्वास है। लेकिन जो आपने कहा तो मैं विदाउट रॉयल्टी एक दो सुझाव दे दूं। कोई रॉयल्टी की जरूरत नहीं है मुझे। देखिए, आप राज्यों की जो चैनल बनाने के लिए सोच रहे हैं, एक के बाद एक करने जाएंगे तो मेल नहीं बैठेगा साहब। मैं मूलतः मेरा सोचने का तरीका ही अलग है, इसलिए मैं कह रहा हूं, आप एक डेडिकेटेड ऐसी चैनल बनाइए जिसमें आप टाइम फिक्स कीजिए कि 2 घंटे गुजराती, 2 घंटे बंगाली, 2 घंटे मलयालम, एक ही चैनल होगी। और आज गूगल गुरु आपका ट्रांसलेशन तो कर ही देता है। और मैं एआई की दुनिया में काफी आगे बढ़ा रहा हूं देश को। अब मेरे अपने भाषण 8-9 भाषाओं में तो आप आसानी के साथ सुन सकते हैं। अभी मैं भाषण कर रहा हूं, सभी भाषाओं में बहुत ही
विदाउट नो टाइम मिल जाएंगे, तमिल लोगों को मिलेगा, पंजाबियों को मिलेगा। आप भी, उससे क्या होगा, आपकी एक कोर टीम तैयार हो जाएगी, और जो कोर टीम ज्यादा तैयार होती है, जो इकोनॉमिकली वायबल बनता है, फिर आपको 15 दिन के बाद उसको डेडिकेट कर दीजिए। आप एक दिन में 6 राज्यों की चैनल क्यों नहीं चलाते? टाइम फिक्स कर दीजिए। और टेक्नोलॉजिकली ये सब बड़ा बहुत मुश्किल काम नहीं है। दूसरा, जो आप ग्लोबल चैनल बनाना चाहते हैं, जरूरी नहीं कि हर कोई आपकी चैनल देखे। शुरू में आप एक न्यूज एजेंसी के रूप में 4 देशों पर काम कर सकते हैं। ये मालदीव वाले लोगों को मदद हो जाएगी। रशीद मेरा बहुत पुराना दोस्त है, तो मैं उसे कुछ भी कह सकता हूं। लेकिन अगर आप 4 देशों में कम से कम, क्योंकि उन लोगों को इंडिया के न्यूज में इंटरेस्ट होता है, 4 देशों में, उनकी लैंग्वेज एक प्रकार से, फिर बिम्स्टेक में चले जाइए। धीरे धीरे मैं समझता हूं, लेकिन ये काम ऐसा नहीं होता साहब कि इस 5 साल में मनरेगा करूंगा, फिर 5 साल तक मनरेगा के ढोल पिटूंगा। देश ऐसे नहीं चलता है जी। देश तेज गति से चलता है। देश को बहुत बड़े काम करने होते हैं। और मैं मानता हूं आपको तो चुनाव लड़ना नहीं है, भी चिंता क्यों कर रहे हो? और मुझे लड़ना है तो भी मैं चिंता नहीं करता हूं। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। मोदी जी, प्रधानमंत्री जी, नेशन वॉन्ट्स टू नो, पूछता है भारत। प्रधानमंत्री जी ने जो 75 डेज की रिपोर्ट कार्ड हमारे सामने रखी, उसे हमें ऊर्जा मिली कि नहीं मिली? डिड वी ऑल फील एनर्जाइज्ड बाय दैट और नॉट? लाउडर। मोदी जी, प्रो इनकम्बेंसी यही है, दिस इज द बिलीफ। दूसरी बात कहूंगा मोदी जी, आई विल कीप इट वेरी शॉर्ट, वेरी शॉर्ट। आपके स्टाइल और आपकी थिंकिंग को कोई ट्रेडिशनल पॉलिटिकल एनालिस्ट या ट्रेडिशनल इकोनॉमिस्ट समझ नहीं पाते हैं, बिल्कुल नहीं समझ पाते हैं मोदी जी। क्यों? मगर आपने जो बात कही, अगर कोई गहराई से समझने की कोशिश करे, यू आर द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री and of this generation and in the world who understands the macro picture and the micro picture. You are, and it's very, ये इसलिए बनी है क्योंकि आप देश के जमीन से जुड़े हुए हैं। यू बीन अ सोशल वर्कर। मैं आपको जानता हूं बहुत दिनों से मोदी जी, जब आप छोटे से रूम में रहते थे बीजेपी कार्यालय से पीछे, तो आप जी तो मैं, और मोदी जी हैव बीन वेरी काइंड टू मी। मुझे पता है आपको बहुत तकलीफ देता था तब भी मैं, मगर मैक्रो और माइक्रो समझना बहुत मुश्किल है। आप गगनयान और जीएसटी के बारे में भी सोचते हैं, मगर आपने जो दिव्यांगों के बारे में जो ये साइनेज सिस्टम की बात कही, इससे आपकी एम्पैथी और अंडरस्टैंडिंग भी दिखती है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ लीडर एंड दैट्स व्हाई पीपल बिलीव इन इट। ये कोई स्ट्रक्चरल इकोनॉमिक्स की बात नहीं है मोदी जी। और आपने एक और बात कही जिससे मतलब हम पे बहुत प्रभाव पड़ा, सब पे प्रभाव पड़ा, और पिछले 5 दिन से ट्रेंडिंग है मोदी का परिवार। और कोई आर्टिफिशियल ट्रेंडिंग नहीं है, इनऑर्गेनिक नहीं है, ये लोग कह रहे हैं ऑल ओवर। जब से किसी ने कहा कि मोदी जी का परिवार ही नहीं है, तो इट इज नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग, हम मोदी के परिवार है। हमारे न्यूज रूम में छोटे बच्चे भी वीडियो मैसेज भेजते हैं, आपको मैं भेज दूंगा, मोदी का परिवार हैशटैग करके। और आपने कहा कि जिनको लायबिलिटी मानकर छोड़ दिया गया था, उनके साथ आप खड़े हैं। दिस इज एब्सोल्युटली ट्रू।
और यही मतलब स्ट्रक्चरल इकोनॉमिक्स से तो इकोनॉमिक नींव बनती है, आपने देश की सोशल नींव बनाई है. यू हैव ब्रॉट बैक रेस्पेक्ट, यू हैव गिवन रेस्पेक्ट टू एवरी इंडियन, रेस्पेक्ट टू एवरी इंडियन, मोदी जी. Finally, Modi ji, nation looks forward to your leadership. The nation looks forward to your leadership for many years and many, many, many decades to come. We wish you good health. The way you are working and the way you are traveling, we wish you absolutely the very best. And in 2 months, you are going to start your 3rd term. मतलब अभी तो मतलब मोदी जी 7-8 हफ्तों में आप एक ऐतिहासिक मैंडेट के साथ अपने ऐतिहासिक 3rd टर्म की शुरुआत करेंगे. एंड वी लुक फॉरवर्ड टू वर्किंग विथ यू टू टेकिंग योर विजन ऑफ द कंट्री फॉरवर्ड. थैंक यू फ्रॉम ऑल ऑफ अस एट रिपब्लिक. बहुत बहुत धन्यवाद प्रधानमंत्री जी. Ladies and gentlemen, kindly remain in your places until the Honorable Prime Minister has left the hall. With that invigorating and inspirational vision, the Honorable Prime Minister the Republic Media Network Summit 2024, ladies and gentlemen, draws to a close. Thank you very much, ladies and gentlemen. Please remain in your places until the Honorable Prime Minister has left the premises. Thank you to our esteemed speakers, guests, and believers in the future of Bharat's identity and destiny. It is upon each of us, ladies and gentlemen, stakeholders that we are, to come together to take these deliberations and script the destiny of our great nation. I would like to thank on behalf of the Republic Media Network, our sponsors, our main presenter, RP Sanjeev Goenka Group, powered by Reliance Digital, co-powered by Reva University, co-powered by Raveen, driven by Maruti Suzuki, insurance partner LIC, banking partner Bandhan Bank, state partners, Uttar Pradesh government and the government of Meghalaya. Thank you very much, ladies and gentlemen. Safe travels, and we hope to see you again next year with a new mandate. Public Media Network, I extend our deepest gratitude to him. Our deepest gratitude to you, sir, for sparing your precious time to be here with us today. फ्रेंड्स, दोस्तों, सियासत के हर संकट का समाधान जिनके पास है, the one who is the master of checkmating every political and opposition move, विपक्ष की सियासी सोच पर जो सबसे कड़ी चोट करते हैं, the one who is known in the country and around the world today as the modern day Chanakya of Indian politics. हमारे साथ आज, we are very privileged, we are very proud, we are very happy, Amit Shah ji. And we have waited for this a long time, that from your busy schedule, your very, very busy schedule, you have taken time to be with us at the Republic Network Summit. So, बहुत बहुत धन्यवाद, and let us start with a round of applause for him. Amit Shah ji, we are very happy today. We are very happy. बहुत सवाल हुए थे आज कि will he make it, will he come? He is so busy, there is a cabinet meeting, Prime Minister is in Jammu and Kashmir. But you are here, and we are very happy, and we want to speak to you openly, and a lot of people are watching this. आज हमारे सब channels में streaming सब लोग देख रहे हैं.
तो आई स्टार्ट विद माय फर्स्ट क्वेश्चन अमित शाह जी। लोकसभा चुनाव के लिए 195 बीजेपी उम्मीदवारों की लिस्ट अभी आ चुकी है और प्रधानमंत्री जी ने 370 सीट की टारगेट फिक्स की है और एनडीए का अपना टारगेट 400 का है। सवाल मेरा यह है अमित शाह जी कि ये जो टारगेट है, ये लक्ष्य जो है, ये सेंटिमेंट्स को लेकर है, उसके आधार पर है, या फिर कोई स्टेट टू स्टेट डिटेल्ड पॉलिटिकल मैपिंग भी की गई है? इस पर आप अगर कुछ हमारे साथ जानकारी हमें साझा करें तो वी कैन स्टार्ट विद दैट। देखिए, भारतीय जनता पार्टी राजनीति में विजय प्राप्त कर सत्ता प्राप्त कर लंबे समय तक सरकारें बनाने के लक्ष्य से नहीं है। हम राजनीति में जब से हमारी पार्टी की स्थापना हुई तब से आजादी के आंदोलन के वक्त से जो लोग भारत को जानते थे, उनकी कल्पना के भारत बनाने के लिए हम राजनीति में आए हैं। लाखों लोगों ने बलिदान ऐसे भारत के लिए नहीं दिया था जिसकी दुनिया में कोई पूछ न हो, ऐसे भारत के लिए नहीं दिया था जो असुरक्षित हो, अशिक्षित हो, इसका 2/3 हिस्सा दारुण गरीबी में अपना जीवन व्यतीत करता हो और विश्व में इसका कोई सम्मान न हो, ऐसे भारत के लिए आजादी का आंदोलन नहीं लड़ा गया था। आजादी का आंदोलन एक सशक्त, समृद्ध, सुरक्षित, शिक्षित और विश्व गुरु के स्थान पर बैठे हुए भारत की रचना के लिए लड़ा गया था और उसी लक्ष्य के लिए हम राजनीति में हैं और उसी लक्ष्य के लिए हम काम कर रहे हैं। जहां तक ये सीटों का सवाल है, जब से हम पार्टी बनाए तब से लेकर आज तक, 1950 से आज तक, हम जो कल्पनाएं लोगों के सामने रखे थे, हमारा एजेंडा लोगों के सामने रखे थे, इसकी पूर्ति के लिए जब इस देश की जनता ने पूर्ण बहुमत की नरेंद्र मोदी सरकार बनाने का मौका दिया, मोदी जी पर भरोसा किया, मोदी जी को 2 टर्म पूर्ण बहुमत का सरकार दिया, तब ये 10 साल हमने इसके लिए काम किया है। और मैं मानता हूं कि आजादी से लेकर अब तक के इतिहास में ये 10 साल भारत के विकास की दृष्टि से, भारत की सुरक्षा की दृष्टि से और भारत के विश्व में गौरव को बढ़ाने की दृष्टि से ये भारत का स्वर्णिम काल रहा है। मगर मैं आज ये भी कहना चाहता हूं देशवासियों से, ये फुल स्टॉप नहीं है, ये शुरुआत है। अच्छा समय आने वाला है और अच्छा समय आने वाला है और इसके लिए ये जो प्रयास हमने 10 साल किया है, जो प्रचंड जन समर्थन देश भर में आज नरेंद्र मोदी जी को, भारतीय जनता पार्टी को, एनडीए को मिल रहा है। मैं देश के कोने कोने में गया हूं। चुनाव के पहले ही मैंने 136 सीटों का विजिट करा है। मैं आपको बता सकता हूं कि देश के कोने कोने से नरेंद्र मोदी जी के समर्थन में जनता खड़ी है। इसी के आधार पर हमने 370 के आंकड़े का लक्ष्य रखा है, 400 पार के आंकड़े का लक्ष्य रखा। ये लक्ष्य हमारा वास्तविक भी है और मैं आज बड़े विश्वास के साथ देश की जनता को कहने वाला हूं कि आप एक बार, आपके मन में जो आशीर्वाद पड़ा है, प्यार पड़ा है, उसको मत में परिवर्तित कर दीजिए। 400 पार देखते देखते हो जाएगा और एक मजबूत सरकार बन जाएगी। अगला सवाल मेरा अमित शाह जी शब्दों के संयम पर है। वैसे नेताओं का स्टैचर जितना बढ़ता है, संयम भी बढ़नी चाहिए, मगर लालू प्रसाद यादव जी ने हाल ही में एक बहुत ही विवादित बयान दिया था जिस पर पिछले 2-3 दिन से इस पर ही बहुत डिबेट हो रही है। उन्होंने कहा था कि मोदी जी का परिवार ही नहीं है। उन्होंने कहा कि मोदी जी का परिवार ही नहीं है। हर चुनाव के पहले
क्या जानबूझकर ये सेल्फ गोल किए जाते हैं? पिछले 3 चुनाव में पहले हमने देखा चाय वाला, फिर हमने देखा चौकीदार चोर है, और अब ये कि मोदी जी का परिवार नहीं है। तो पिछले 3 चुनाव में कुछ ऐसे ही दिखने को मिला है, तो ऐसे विपक्ष पर आप क्या कहेंगे? देखिए, इस तरह की बातें वही लोग कर सकते हैं जिनके पास और कोई रास्ता नहीं बचा है। ऐसी ओछी बातें कर कर देश की राजनीति को, उसके स्तर को गिराने का जो काम कर रहे हैं, हर बार जनता उसका जवाब देती है। परंतु मैं एक बात बताना चाहता हूं, मैंने मोदी जी को बहुत करीब से देखा है, कई सालों से उनके साथ काम किया है। लालू जी ने एक महीने में सही ही कहा है कि मोदी जी का कोई परिवार नहीं है। परिवार जिनका होता है वो बेटे बेटियों को प्रधानमंत्री बनाने का प्रयास करता है, मुख्यमंत्री बनाने का प्रयास करता है, सत्ता पर बिठाने का प्रयास किया है। इस व्यक्ति ने 40 साल से केवल और केवल देश की जनता के लिए काम किया है। 23 साल से मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री रहने के बाद भी मैंने एक दिन छुट्टी लेते हुए उनको नहीं देखा है। सुबह 5 बजे से रात को 1 बजे तक अहर्निश काम काम काम, एक दिशा में काम और सेल्फलेस काम करते हुए मैंने देखा है। और इसी का परिणाम है कि उनके नेतृत्व में इतनी बड़ी कैडर खड़ी हुई है, इतने सारे नेताओं की श्रृंखला खड़ी हुई है, एक मजबूत भारतीय जनता पार्टी खड़ी हुई है, और देश आज दुनिया में सर्वप्रथम बनने के लक्ष्य के साथ संकल्प लेकर 2047 में विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत का आत्मविश्वास भरकर देश आगे बढ़ रहा है। पूरी दुनिया कोई भी समस्या हो, पर्यावरण की हो, आतंकवाद की हो, इथेनॉल ब्लेंडिंग की हो, या दुनिया में आए हुए विवादों और विवादों की समस्या हो, हर समस्या में दुनिया राह देखती है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कहते हैं, और जो कहते हैं वो ट्रेंड बनता है, जो कहते हैं उसको पूरी दुनिया स्वीकार करती है। और मैं मानता हूं कि लालू जी कभी ये राजनीति नहीं समझ पाएंगे, कि परिवारवादी पार्टियां कभी ये राजनीति नहीं समझ पाएंगी, क्योंकि इनके जीवन का लक्ष्य कभी भी देश नहीं रहा है, देश का गरीब नहीं रहा है, देश की जनता नहीं रही है, देश का सम्मान नहीं रहा है। उनका लक्ष्य केवल और केवल अपने बेटे बेटियों को राजनीति में उच्चस्थ स्थान पर बिठाना रहा है। वो सहन ही नहीं कर सकते कि एक गरीब घर का बेटा, चाय बेचने वाले का बेटा, जिसका कोई राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं है, कोई जाति का बैकग्राउंड नहीं है, वो इतने बड़े देश का प्रधानमंत्री बनेगा, 2 बार बनेगा, 3 बार बनेगा, और सफल प्रधानमंत्री बनकर देश को महान बनाएगा। वो सहन ही नहीं कर सकते। अमित शाह जी, एक गंभीर मुद्दा है जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज, जो जांच एजेंसियों के साथ जो अभी हो रहा है, और ये सेंटर स्टेट रिलेशन से भी लिंक्ड है। हाल ही में बंगाल में संदेश खाली में ईडी की टीम जब गई तो उन पर हमला हुआ, और हमलावर ने कबूला कि हां, हमने हमला करवाया, हमने लोगों को लेके हमने एक मर्डरस अटैक करने की कोशिश की इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज पर। और ऐसे लोगों को समर्थन भी मिलता है वहां के जो रूलिंग पार्टी है स्टेट की। ईडी के समन भेजे जाते हैं मगर नेता हाजिर नहीं होते। इससे एक बुरा ट्रेंड देश पर भी जाता है। अरविंद केजरीवाल को अब तक 8 समन भेजे गए, 8 समन। और कई राज्य ऐसे भी हैं जिन्होंने अपने रूल्स को चेंज करके सीबीआई को नहीं घुसने दिया। ये बहुत सीरियस मामला है, और अगर ये झगड़ा और बढ़ जाए तो इसके बहुत इंप्लीकेशंस हो सकते हैं। तो आप इसको कैसे रोकेंगे? आप पत्रकार हो, आपको लगता है कि ये समस्या बहुत बड़ी हो जाएगी, देश गंभीर संकट में आ जाएगा? मुझे कोई डर नहीं है। डेमोक्रेसी में हर चीज का जवाब जनता दे देती है, जनता सब देखती है। अगर बंगाल में किसी के घर से 52 करोड़ रुपया इकट्ठा मिल जाता है, झारखंड में किसी के घर से 355 करोड़ रुपया कैश मिल जाती है, 25 मनी मशीन कैश गिनते गिनते गर्म हो जाते हैं, और ये कहते हैं हम पर एक्शन न लो। क्या कह रहे हैं? मैं आपको बताना चाहता हूं कि यूपीए सरकार के खिलाफ
40 केस सिर्फ यूपीए को रजिस्टर करने पड़े। हम ऑपोजिशन में थे, संसद में मामले उठाते थे, पीआई लगाते थे, कोर्ट ऑर्डर करती थी, उनको जांच करनी पड़ती थी। उस वक्त तो आप ही सत्ता में थे भाई। और आज देश में अदालतें हैं, अगर किसी को अन्याय हो रहा है तो अदालत में जाइए, अदालत सुनेगी आपको। मगर वास्तविकता यह है कि 12 लाख करोड़ के घपले घोटाले कर कर अपने घर भर कर बैठे हुए लोग जांच से डरते हैं और इसीलिए ये हवा खड़ा करते हैं एजेंसियों का। मैं आज उनको कहना चाहता हूं, 12 लाख करोड़ के घपले घोटाले किए, सैकड़ों जांच आपके सामने हुई, जेल में जाना पड़ रहा है। 23 साल से नरेंद्र मोदी सत्ता पर है, मुख्यमंत्री भी रहे, प्रधानमंत्री भी रहे, 10 साल से हमारी सरकार है। एक चार आने का भी आरोप नरेंद्र मोदी पर हमारे विरोधी भी नहीं लगा पाए। हमने पारदर्शिता से शासन किया है। और मैं आज चाहता हूं विपक्ष के मित्रों को, आपके खोखले प्रचार के साथ जनता आने वाली नहीं है। आप इससे एक्सपोज हो रहे हो, आप कानून का साथ नहीं दे रहे हो। अगर आपको कोई ग्रीवेंसेस है तो अदालतों में जाना चाहिए, वहां से प्रोटेक्शन लेना चाहिए। मगर आप कोऑपरेट नहीं कर रहे हो, वो तो ठीक नहीं हो रहा है। मैं किसी व्यक्ति के बारे में नहीं कह रहा हूं। जहां तक संदेश खाली का सवाल है, मैं मानता हूं संदेश खाली की घटनाओं ने बंगाल के शासन को 100% एक्सपोज कर कर रख दिया है। एक महिला मुख्यमंत्री के राज्य में जिस तरह से धर्म के आधार पर महिलाओं का शोषण हुआ है, वो सहन ही नहीं किया जा सकता। हम इसके खिलाफ लड़ेंगे, एड़ी चोटी का जोर लगाकर लड़ेंगे और बंगाल में हम परिवर्तन कर रहेंगे। आपने संदेश खाली पे जो कहा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद अमित शाह जी। सब लोग सुनना भी चाहते थे और आज आपकी जो मैसेज है बहुत क्लियरली जा चुकी है। मैं आपको कहना चाहूंगा कि संदेश खाली के महिलाओं के साथ जिस तरह का अत्याचार हुआ है, और ये अब नहीं, 1-2 महीने से नहीं, ये कई सालों से चल रहा है। और जब हमारी टीम भी वहां गई तो हमारे रिपोर्टर भी अरेस्ट हो गए, और रिपब्लिक बांग्ला ने जब सच दिखाया तो हमको भी कुचलने की कोशिश की गई थी। मगर आपने जो आज मैसेज दिया है बहुत बड़ी बात है। बंगाल की परिस्थिति पर मैं चाहता हूं थोड़ा और आप बताएं, आप बंगाल की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पर संदेश खाली ही नहीं, उसको आप कैसे देखते हैं? हर दिन ऐसे न्यूज में इस तरह की घटनाएं आ रही हैं आजकल। देखिए, बंगाल एक बॉर्डर स्टेट है। हम सब जानते हैं कि घुसपैठ की समस्या सबसे ज्यादा अब कोई एक राज्य में बची है तो बंगाल में बची है। और मैं बिल्कुल विश्वास के साथ देश की जनता को तथ्यों के आधार पर बता रहा हूं कि बंगाल से जो घुसपैठ होती है वो स्टेट स्पॉन्सर घुसपैठ है। इसमें किसी को शंका रखने की जरूरत। स्टेट स्पॉन्सर्ड इन्फिल्ट्रेशन, अपनी वोट बैंक की राजनीति को बढ़ाने के लिए, अपनी वोट बैंक को बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा को ताक पर रखा जा रहा है। ये बहुत गंभीर समस्या है और बंगाल की जनता भी उसको मान रही है। मैं आज पूरे देश भर के लोगों को बताना चाहता हूं कि देश ने बंगाल के साथ खड़ा रहने की जरूरत है। वहां गंभीर समस्या है जी। ये बॉर्डर स्टेट को हम सब ने गंभीरता से लेने की जरूरत है। बंगाल में भी जागरूकता आई है। हम एक भी सीट नहीं थे, हम 18 जीते। इस बार हम 25 का आंकड़ा पार कर कर पूर्णता की ओर आगे बढ़ रहे हैं। हमारे 2 एमएलए थे, 77 बने हैं। मजबूत विपक्ष के रूप में हमारी भूमिका अदा कर रहे हैं। बंगाल में जो शासन है वो भ्रष्टाचारी है। बंगाल में जो शासन है वो धर्म के आधार पर एपीसमेंट करने वाला शासन है। बंगाल में जो शासन है वो न्यायी शासन है। देश की सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी है कि वहां परिवर्तन हो और भारतीय जनता पार्टी वहां संघर्ष कर रही है। मैं बंगाल की जनता को भी विनती करने आया हूं कि आप हमारा समर्थन करिए। मोदी जी के नेतृत्व में बड़ी मजबूत प्रतिनिधित्व बंगाल से एक बार भेजिए। हम बंगाल को फिर से सोनार बांग्ला बनाना चाहते हैं, उसमें आपका साथ और साथ जी। ये बहुत बड़ी बात कही है आपने। 2 हेडलाइन तो है। पहली बात उन्होंने कही कि सरकार की, राज्य सरकार की स्टेट स्पॉन्सर्ड इन्फिल्ट्रेशन है। ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि हर बार स्टेट गवर्नमेंट कहती है कि बीएसएफ का दोष है। और दूसरी बड़ी बात आज आपने कही कि
18 नहीं 25 से ज्यादा 42 में से out of 42 more than 25 seats he says is going to be the target for the BJP in Bengal. That's a big headline. Amit Shah ji, Ram Mandir, धारा 370 और अब यूनिफॉर्म सिविल कोड, वन नेशन वन लॉ, ये ऐसा मुद्दा है अमित शाह जी, जब भी हम कोई हमारे नेटवर्क पे इस पर बात करते हैं हर बार मिनटों के अंदर ये सब्जेक्ट ट्रेंड करता है, यानी कि बहुत मास सपोर्ट है। आप इधर ही हमारे ऑडियंस को पूछ ले, यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए टाइडल वेव ऑफ सपोर्ट है। तो एक हर बार जब, और आपको नहीं, आप ही इस पर हमें क्लैरिटी देते, राज्यों में हो रहा है। अभी उत्तराखंड की बात हुई कि एक एक करके राज्यों में होगा, मगर कई लोग चाहते हैं कि जैसे ट्रिपल तलाक वाज अ नेशनल लेवल पे चेंज की गई, तो यूनिफॉर्म सिविल कोड हमारे देश में कब आएगी, इस पर प्लान क्या है? इलेक्शन अनाउंस होने वाले हैं, उसके पहले आप अगर थोड़ी क्लैरिटी दे दे तो। दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को जी धर्म के साथ जोड़कर दिखा गया है। मैं आज देश की जनता को बताना चाहता हूं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा तो है ही, जब से हमारी पार्टी की स्थापना हुई 1950 से, तब से हम कहते हैं कि हम पावर में आएंगे तो यूनिफॉर्म सिविल कोड इस देश के अंदर लाएंगे। परंतु संविधान सभा ने भी आर्टिकल 44 में, आर्टिकल 44 में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स फॉर स्टेट में एक कहा है कि इस देश के विधानमंडल और संसद उचित समय पर यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करेंगे। जी, अगर आप पंथ निरपेक्ष देश की कल्पना चाहते हैं, पंथ निरपेक्ष राज्य की कल्पना चाहते हैं, तो धर्म के आधार पर कानून कैसे हो सकता है? धर्म के आधार पर कानून नहीं हो सकते। इस देश में एक कानून होना बहुत जरूरी है। जी, और उत्तराखंड सरकार को मैं बधाई देना चाहता हूं। भारतीय जनता पार्टी की उत्तराखंड सरकार ने इसके लिए सुप्रीम कोर्ट की निवर्तमान न्यायाधीश की एक कमेटी बनाई। लगभग 780 पन्नों की रिपोर्ट आई है, उसमें 42 चैप्टर है, और उसमें से एक बिल बनाकर उत्तराखंड सरकार ने, उत्तराखंड की असेंबली ने इसको पारित किया है, जो भारत सरकार में स्वीकृति के लिए आया है। कुछ ही दिनों में इसको हम स्वीकार भी कर लेंगे, और उत्तराखंड ऐसा राज्य होगा देश में जहां सबसे पहले यूसीसी लागू हो जाएगा। आपने जो सवाल किया कि देश भर में कब लागू होगा, राष्ट्रीय स्तर पर, जी देखिए ये बहुत बड़ा सोशल रिफॉर्म है। यूनिफॉर्म सिविल कोड बहुत बड़ा सोशल रिफॉर्म है। हम डेमोक्रेटिक कंट्री है, लोकतांत्रिक देश है। इस देश में हर चीज पर बहस होनी चाहिए। ये जो यूसीसी का बिल उत्तराखंड सरकार ने कानून पारित किया है, जी, उस कानून की सोशल स्क्रूटिनी होनी चाहिए, इस कानून की लीगल स्क्रूटिनी होनी चाहिए, और इस पर व्यापक बहस भी देश भर में होनी चाहिए। सभी दलों में भी होनी चाहिए, सभी धर्मों के मुखियाओं के बीच में भी होनी चाहिए। उसके बाद इसकी सोशियो लीगल स्क्रूटिनी के बाद कुछ टीथिंग प्रॉब्लम अगर आएंगे तो इसको दूर कर देश के सभी विधानमंडल इसको लागू करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। परंतु मैं निश्चित रूप से देश की जनता को ये कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी मानती है कि कश्मीर से कन्याकुमारी और कामाख्या से द्वारिका तक इतने बड़े देश के हर चप्पे चप्पे पर यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए, और ये देश एक कानून से चले। तीसरे टर्म में हो जाएगा, तीसरे टर्म में हो जाएगा एक टारगेट। देखिए जी, मुझे ना टीआरपी बनानी है, ना मैं जोशी हूं, तो ये तो जनता को ही तय करने दीजिए आप। मैंने रोड मैप मेरी पार्टी का जो है वो बताया। क्या आपको लगता है, एक फॉलो अप सवाल, कि इंडिया कैन नॉट बी ट्रूली सेक्युलर विदाउट यूनिफॉर्म सिविल कोड? अगर हम सेक्युलर देश हैं, असली सेक्युलरिज्म तो तभी होगी व्हेन ऑल द पीपल ऑफ द कंट्री आर गवर्न्ड बाय वन लॉ। क्या आप मानेंगे कि हम सेक्युलर तभी बन सकते हैं पूरी तरह से जब एक कानून बने सबके लिए? कानून के आधार पर कोई देश पंथ निरपेक्ष नहीं बन सकता। देश की जनता ही पंथ निरपेक्ष। हम सालों से पंथ निरपेक्ष रहे हैं।
हमारे यहाँ धर्म हमेशा राज्य का विषय नहीं रहा है, धर्म व्यक्ति का विषय रहा है, और धर्म व्यक्ति को बड़ा बनाने की दिशा में ले जाता है। ये कभी राज्य का विषय हजारों साल से भारत में नहीं रहा है। ये हमें क्या पंथ निरपेक्षता सिखाएंगे, हम हजारों सालों से इसी तरह से जी रहे। परंतु डेमोक्रेटिक सेटअप के अंदर पूरे देश के लिए कानून होना बहुत जरूरी है, और मैं मानता हूं कि ये जितना हो सके उतना जल्द हो जाना चाहिए। मैं अपना एक इंटरप्रिटेशन करता हूं आपने जो कहा, क्योंकि मैं कई बार आपके साथ जो इंटरव्यू की थी 370 हटाने के पहले कई बार मैं पूछता था, और इसी फोर्स, इसी पैशन और इसी स्टाइल से वो कहते थे कि हम पूरी तरह से कमिटेड है। और मुझे अभी भी याद है अमित शाह जी कि जिस सुबह 370 और 35A को अबॉलिश की गई, उस सुबह तक लोग कह रहे थे ये कभी नहीं हो सकता है, कश्मीर जल जाएगा। मुझे आज लग रहा है आप उसी फोर्स और पैशन के साथ यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में कह रहे हैं, और हमें अभी भी उम्मीद है कि ये अर्णब बाबू का इंटरप्रिटेशन है। नहीं, मुझे देखिए अमित शाह जी, देखिए मैं थोड़ा इनफॉर्मली आपको कहना चाहता हूं, जिस दिन आप तो सरकार के बिल्कुल अंदर हैं, आप सरकार चलाते हैं, बाहर के लोग कोई विश्वास नहीं कर रहे थे कि इतना बड़ा चेंज हो सकता है। और आपकी क्लिप जो अभी हमने प्ले की, जो वायरल हुई और अभी तक वायरल है, आपको पता है वो पाकिस्तान वाली क्लिप की, वो ये किसी ने विश्वास नहीं किया था। मुझे लगता है चेंज तो आप ला सकते हैं, एंड आई थिंक यू विल ब्रिंग द चेंज ऑन यूनिफॉर्म सिविल कोड। चले, आपकी शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद। अमित शाह जी, बंगाल में ही नहीं पूरे देश में, गृह मंत्री जी, CAA कब लागू होगा? क्योंकि अब मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट कभी भी लागू हो सकता है, और आपका बयान भी आ चुका है कि CAA लागू होकर रहेगा। तो इस पर कोई टाइमलाइन आप कह सकते हैं कि कब होगा? मैं फिर से कहता हूं, CAA ये देश का कानून है, पत्थर पर लकीर है, ये वास्तविकता है, ये लागू होगा ही होगा, और इस चुनाव के पहले होगा। इस चुनाव के पहले होगा, इस चुनाव के पहले होगा। ये बहुत बड़ी बात कही है आज। मैं तो ये कह सकता हूं कि ये हाहाकार हो गई। आपने जो बात अभी कही है, गृह मंत्री जी ने बहुत बड़ी बात हम सबके सामने प्रणव जी, तालियां बज गई, कोई धमाका नहीं। ये बात मैं 10 बार बता चुका हूं। नहीं, मगर आप चुनाव के पहले CAA लागू होगा। इस देश का कानून है, इसको कोई नहीं रोक सकता। फैंटास्टिक। तो नोटिफिकेशन बस आने वाली है, फिर आपको लगता है नोटिफिकेशन तो बस आने वाली है। देखिए, हमें तो ब्रेकिंग न्यूज चाहिए ना। आपने इतनी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज दी है, आदत से मजबूर हम भी हैं। बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है, और मुझे लगता है सब लोग इस पर जरूर बात करेंगे, और इसका प्रभाव क्या होगा, इसका इंपैक्ट क्या होगा, अगर आप संक्षिप्त में इस पर कुछ कह सकें। देखिए, CAA कानून कोई नई बात नहीं है जी। कांग्रेस पार्टी कई चीजों को भूल गई है। मत बैंक की लालच में, वोट बैंक की लालच में कई चीजें भूल गई है। जैसे UCC, जी, संविधान सभा का वादा था। इसी तरह से जब देश का दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से धर्म के आधार पर विभाजन हुआ, तब पाकिस्तान और अब के बांग्लादेश से लाखों की संख्या में हिंदू, बौद्ध, सिख शरणार्थी आ रहे थे, और मार काट हो रही थी। कांग्रेस के ही नेताओं ने, देश के नेताओं ने एक वादा किया था, आप धैर्य रखिए, आप कभी भी यहाँ आएंगे, आपको ये देश स्वीकार करेगा, आपको नागरिकता देगा। इस वादे पर सभी लोग वहां रहे जी। उनके पर अनेक प्रकार के अत्याचार हुए, धार्मिक प्रताड़ना हुई, धर्म परिवर्तन करने के लिए दबाव बनाया गया, उनकी महिलाओं को, हमारी माताओं बहनों को अपमानित किया गया। वो लोग बदलने के लिए भारत की शरण में आए, और अगर आज भारत अपने वो वादे को जो 15 अगस्त 1947 में किया गया है उसको याद नहीं करता है, तो वो ठीक नहीं होगा। करोड़ों लोग इस देश के अंदर नागरिकता के बगैर रह रहे हैं, जो वहां से प्रताड़ित। मुझे कोई बता सकता है, ममता बनर्जी बता सकती है कि वो कहां जाए? कहां जाएंगे वो लोग? वहां उनकी सुरक्षा नहीं है, उनकी महिलाओं को अपमानित किया जा रहा है, हमारी माताओं बहनों को अपमानित किया जा रहा है, धर्म परिवर्तन करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। हम भी शरण न दे जी, हम भी उनका स्वागत न करें। भारत में स्वागत है,
भारत उनको नागरिकता की भी देगा और मेरे आपके जितना अधिकार भी देगा और स्वागत करेगा। इतनी खुलकर बातचीत हो रही है, लोग कह रहे हैं सरकार मीडिया से बात नहीं करती, बहुत एक एक न्यूज पॉइंट हमें मिल रहे हैं, वी आर वेरी हैप्पी। तो अमित शाह जी, आप बहुत डायरेक्टली बात कर रहे हैं, बहुत खुलकर बात कर रहे हैं और ये इसके लिए हम बहुत ग्रेटफुल है। अमित शाह जी, ये देश में बंटवारे की राजनीति पर सवाल है, ये बहुत डिबेट हो रहा है। हमारा राष्ट्र सर्वोपरि हमारा स्लोगन है, वी बिलीव इन नेशन फर्स्ट, मगर देश में उत्तर दक्षिण की राजनीति हो जाती है, कोई चुनाव के बाद बांटने की राजनीति हो जाती है, सनातन धर्म और हिंदुओं को जाति में बांटने की कोशिश हो रही है और राहुल गांधी लगातार ओबीसी का मुद्दा उठा रहे हैं। आप लोग विकसित भारत और आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहे हैं। इस तरह की डिवाइसिव पॉलिटिक्स, ये ट्रेंड क्यों बन गई है? ये डिवाइसिव पॉलिटिक्स पर आप क्या कहना चाहते हैं जो इस बार भी हो रहा है? देखिए, भारत जोड़ो के बैनर के तहत भारत तोड़ने की एक्सरसाइज चल रही है। मुझे मालूम नहीं है ये कांग्रेस पार्टी को क्या हो गया है। इतनी पुरानी पार्टी, उनका कोई प्रमुख नेता कहता है हिंदुस्तान के दो टुकड़े कर दो, नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया, और कांग्रेस पार्टी चुप रहती है, साफ सुन गया है, ऐसे चुप रहती है। मुझे तो आश्चर्य हो गया है ये पार्टी को क्या हो गया है। इनके अलाई पानी पी पी कर सनातन धर्म का अपमान कर रहे हैं, सनातन धर्म के लिए जहर उगलने का काम कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी रोकती भी नहीं है, ना मादा है, ना हिम्मत है, ना इच्छा है, और यात्रा लेकर निकलते हैं भारत जोड़ो की। देश की जनता ढंग से समझ ले, इनका एकमात्र लक्ष्य है सत्ता प्राप्त करने का, एपीसमेंट कर कर सत्ता प्राप्त करने का। वो भारत को एक नहीं रख सकते। भारत को एक केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी और भाजपा के नेता नरेंद्र मोदी रख सकते हैं। और मैं देश की जनता को अपील करना चाहता हूं कि जिन लोगों ने भारत को तोड़ने की बात करी है, जिन लोगों ने विश्व के सबसे पुराने धर्म के, पुरानी संस्कृति को और पुरानी परंपराओं को अपमानित करने की बात की है, इनको देश की जनता को पहचान लेने की भी जरूरत है और दंडित करने की भी जरूरत है। आने वाले चुनाव में मैं चाहूंगा कि कांग्रेस के नेता अगर हिम्मत है तो इनके भारत तोड़ो की ये सारी घटनाओं का रिपीटेशन चुनावी मंच पर से करें। वो कोई नेता के मुंह से कुछ निकल गया इसका खंडन भी नहीं करते, पार्टी को अपने आप से अलग नहीं करते हैं। इसका मतलब आपकी पार्टी का एजेंडा ही ये है, आपकी पार्टी का उद्देश्य ही है। और ओबीसी के लिए तो बोलने का कांग्रेस पार्टी को अधिकार ही नहीं। कांग्रेस पार्टी है जिसने इस देश के पिछड़ा वर्ग को सबसे ज्यादा अन्याय किया है। 50 साल तक काका साहब कालेलकर कमीशन की रिपोर्ट को आप दबाकर बैठ गए, इसके बाद मंडल कमीशन की रिपोर्ट को आप दबाकर बैठ गए। जब मंडल कमीशन लागू हुआ देश में, राजीव गांधी ने 1 घंटा और 40 मिनट इसके विरोध में भाषण किया था। कांग्रेस पार्टी 55 साल तक सत्ता पर रही, कभी भी ओबीसी को संवैधानिक स्टेटस नहीं दिया, ओबीसी आयोग की रचना नहीं की, नीट की और केंद्र सरकार की परीक्षाओं में ओबीसी को आरक्षण नहीं दिया। ये सारा काम हुआ नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, और एकमात्र सरकार है जिसमें 27 ओबीसी मंत्री बैठे हैं। और राहुल गांधी देश को ज्वाइंट सेक्रेटरीज गिना रहे हैं, सेक्रेटरीज गिना रहे हैं जी। मैं इनको बताना चाहता हूं, अभी जो भारत सरकार में सेक्रेटरी बना है वो आपके शासन में भर्ती हुआ है, वो प्रमोट होते होते यहां सेक्रेटरी बना है। आप हमें क्या दोष रहे हो? इनको देश का प्रधानमंत्री ओबीसी है वो दिखाई नहीं पड़ता, देश की कैबिनेट में 27 मंत्री है वो दिखाई नहीं पड़ते, किसी एनजीओ ने पकड़ा दिया कि इतने सेक्रेटरी ओबीसी है वो रटे जा रहे हैं। और देश की जनता भी बहुत एंटरटेनमेंट के भाव से उनको सुन भी रही है। मगर वास्तविकता देश की जनता भी जानती है कि ओबीसी का, पिछड़ा वर्ग का जितना विरोध कांग्रेस पार्टी ने किया है, अन्याय जितना कांग्रेस पार्टी ने किया है, इतना किसी और राजनीतिक दल ने नहीं किया।
अगला सवाल आपके मंत्रालय से जुड़ा हुआ सवाल मेरा यह है कि पिछले 5 साल में गृह मंत्रालय ने FCRA यानी कि फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट को लेकर बहुत सख्त कार्रवाई की है। होम मिनिस्ट्री का अपना डेटा है कि 16,000 एनजीओ जो है उनके FCRA लाइसेंस को कैंसिल किया गया है। उसके साथ साथ टेरर फंडिंग, एनजीओ फंडिंग पर रोकने की कोशिश हुई है, लेकिन शायद पूरी सफलता नहीं मिली। इसके पीछे स्ट्रेटेजी क्या है? एक तो जो ओवरग्राउंड और अंडरग्राउंड सेल होते हैं, नेक्सस है, इसके फॉर्मूले को तोड़ने की कोशिश है या एनजीओस को टारगेट किया जा रहा है, वो कहते हैं। तो इस पर अगर आप देखिए अपनी अर्णब जी, आप दो चीजों को मिक्सअप कर रहे हैं। अच्छा, FCRA को हमने कानून में परिवर्तन किया। कानून को में परिवर्तन करने का हमारा उद्देश्य था कि FCRA का उपयोग कर विदेशों से चंदा लाकर, डोनेशन लाकर इस देश की डेमोग्राफी को बदलने का प्रयास नहीं होना चाहिए। एक, सेवा के लिए अगर कोई पैसा भेजता है, सेवा कार्य के लिए करता है, व्यक्ति समूह के उत्थान के लिए भेजता है, तो उसका स्वागत है। हमने कठोर नियम बनाए, ऑडिट कंपलसरी किया और ऑडिट को रेगुलर किया। इसके आधार पर ये सारे रजिस्ट्रेशन कैंसिल हुए हैं। कुछ लोगों ने तो 16,000 में से 12,000 लोगों ने स्वतः ही कैंसिल करा दिया। भारत सरकार ने नहीं किया है, वो स्वतः विड्रॉल का अर्जी डाले हैं। तो 4,000 ऑडिट के आधार पर कैंसिल किए हैं। तो जो लोग हाय तौबा करें, उनको मेरा यही कहना है कि कानून की परिधि में रहकर कोई भी व्यक्ति कितना भी चंदा विदेश से लाए, भारत सरकार को कोई आपत्ति नहीं है। वो देश के नागरिकों के और देश के समाज के उत्थान के लिए खर्च होना चाहिए। देश की जनसांख्यिकी बदलने के उद्देश्य से खर्च नहीं होना चाहिए। अगर जनसांख्यिकी के बदलने के उद्देश्य से खर्च होगा तो हम कठोर से कठोर कार्रवाई करेंगे, इसमें हमारे मन में कोई कंफ्यूजन नहीं। जहां तक टेरर फंडिंग का सवाल है, 1914 से हमने टेररिस्ट एक्टिविटी और टेररिस्टों के इकोसिस्टम को ध्वस्त करने के क्रमबद्ध कदम उठाए हैं। हमने NIA को, ED को, दोनों को टेरर लिंक्स, हवाला के जरिए पैसा आने वाले टेरर फंडिंग और नार्को टेरर लिंक्स को पकड़कर उसको खत्म करने की दिशा में एक्टिव किया है। सैकड़ों रेड्स हुई हैं और बहुत कठोरता के साथ उनके फंडिंग के फ्लो को बहुत पतला करने का काम भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। ऐसी चीजें जो सार्वजनिक चर्चा में नहीं आती है, मगर मैं कहता हूं कि मोदी जी की सरकार की बहुत बड़ी सफलता है कि हमने टेररिज्म के लिए आने वाले फंड को लगभग सूखा नहीं दिया है, समाप्त कर दिया है। ये हमारी बहुत बड़ी सफलता। इसी से जुड़ा सवाल कि नक्सलवाद से भारत को और भारत के लोगों को संपूर्ण छुटकारा कब मिलेगा? देखिए, मैंने कहा है, पहले भी कहा है कि 3 साल के अंदर, आने वाले 3 साल के अंदर, इसका मतलब मोदी 3 में देश नक्सलवाद से पूर्णतया मुक्त हो जाएगा। इसमें कोई संशय रखने की जरूरत 3 साल। अमित शाह जी, एक ट्रेंड और एक है, और ये इसको लाइटली भी लिया जा सकता है, मगर मैं इसको सीरियसली लेता हूं क्योंकि वी आर नेशनलिस्ट, हम राष्ट्रवादी हैं। मगर आजकल एक ट्रेंड बना है कि भारत एक राष्ट्र नहीं है। ये कॉन्सेप्ट लोग इलेक्शन रैलीज में स्टेट लीडर्स बोल रहे हैं। अभी जैसे डीएमके के ए राजा ने कहा, इंडिया इज नॉट अ नेशन। मैं हिंदी में इसका, इंडिया इज नॉट अ नेशन। अर्णब बाबू, आप लोग इससे डर सकते हो, मैं नहीं डर सकता। नहीं, डरने की बात ये नहीं। देश सालों से चल रहा है, दुनिया का सबसे पुरानी सभ्यता है। इस देश को ऐसे कुछ लोग बोलकर कुछ नहीं बिगाड़ सकते। जनता तय कर लेगी। देश में लोकतंत्र है, ऐसा जो बोल रहे हैं जनता ही उसको जवाब देगी। मैं आपकी बात को मानता हूं, मगर इस पर थोड़ी सी चर्चा हुई। सेंटर स्टेट फेडरल स्ट्रक्चर, इसकी बात होती है कि अगर हर बार कई विपक्ष के नेता, राज्य स्तर के नेता ये कहे कि भारत एक राष्ट्र नहीं, तमिलनाडु राष्ट्र है मगर भारत राष्ट्र नहीं है, तो और राहुल गांधी, आप कहेंगे उनकी बात को सीरियसली क्यों लिया जाए? क्योंकि वो विदेश में जाकर हर जगह राहुल गांधी बोलते हैं, हर जगह हम चौंक जाते हैं
कि कोई भी वो विपक्ष के नेता है, फॉरेन सॉइल पे वो जाकर कहते हैं, यूनाइटेड किंगडम में कहते हैं कि भारत राष्ट्र नहीं है, इट इज अ नेगोशिएशन। और ये सीरियसली बात, इस पर मतलब इस पर रिस्पॉन्ड कैसे किया जाए या इसको इग्नोर किया ऐसा जाए? है अर्णव जी, इसमें जनता को रिस्पॉन्ड करने की जरूरत नहीं, कांग्रेस पार्टी ने रिस्पॉन्ड करने की जरूरत है, नेता बदल दे, बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं। अमित शाह जी, आजकल हर जगह और एक चर्चा है कि इंडिया डज नॉट हैव एन ऑपोजिशन। एज द मास्टर स्ट्रेटेजिस्ट ऑफ द भारतीय जनता पार्टी, एंड वी मस्ट कॉम्प्लीमेंट अमित शाह जी फॉर बिल्डिंग व्हाट इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी। और मुझे अभी भी याद है, एक बार मैं इन्हें मिलने गया था तो इन्होंने मुझे आंकड़े दिखाए थे और समझाया था कि ऐसे विद इन दिस फ्यू मंथ्स इस प्लान के साथ कार्डर बेस, मेंबरशिप बेस बना के वी विल मेक बीजेपी द लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी ऑन अर्थ, एंड ही हैज अचीव्ड इट। तो अमित शाह जी, दैट इज वेरी गुड, बट कभी कभी एज इन अ डेमोक्रेसी इज इट नॉट अ जेन्युइन वरी कि मतलब कि देश में एक स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन राष्ट्रीय स्तर पर नहीं है? एज अ पॉलिटिकल एनालिस्ट आप कैसे देखते हैं इसको? ऐसा है, मैं भी मानता हूं देश में मजबूत विपक्ष होना चाहिए जी, मगर मैं नहीं बना सकता। सत्ताधारी पक्ष और विपक्ष की रचना संवैधानिक है, वो देश की जनता बनाती है। हम भी विपक्ष में बैठे हैं, जनता ने हमें विपक्ष बनाया था, आज जनता ने हमें अधिकार दिया है। तो विपक्ष को मजबूत बनाना या निर्बल बनाना उनके काम के आधार पर देश की जनता तय करती है, कोई सरकार तय नहीं कर सकती, कोई पार्टी तय नहीं कर सकती। हम संवैधानिक व्यवस्था से जीने वाला राष्ट्र है। मैं इतना ही कर सकता हूं कि विपक्ष निर्बल हो तो भी भारतीय जनता पार्टी हर रोज आत्मचिंतन करती रहे, हमारे अंदर अहंकार न आए, हमारे यहां पर भ्रष्टाचार न आए, हमारे यहां परिवारवाद न आए, और हम लोकतांत्रिक मूल्यों को संभाल कर इसका जतन कर कर आगे बढ़ते रहें। हम इतना ही कर सकते। विपक्ष को मजबूत करना, रखना, नहीं रखना, ये सब देश की जनता को तय करना है, सब पार्टियों का परफॉर्मेंस देखकर। और देश की जनता, मैं मानता हूं कि बहुत मैच्योर डिसीजन लेती है। जी, ये बड़ी बात है, मगर क्योंकि लोकतंत्र में एक विपक्ष होना और विपक्ष का मजबूत होना भी बहुत जरूरी है। आप आज से 5-10 साल बाद किसको विपक्ष देखते हैं? मतलब who do you think will be the opposition to the BJP? देखिए, इतना दूर का आकलन कोई नहीं कर सकता, सिर्फ करने के खातिर कोई कर सकता है। देश में एक प्रकार से बहुत डायनेमिक डेमोक्रेसी है जो परफॉर्मेंस को इवेल्युएट कर कर अपना मैंडेट देती है। तो देश की जनता का मूड और देश की जनता का मैंडेट पहले एक जमाने में जातिवाद, परिवारवाद, भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण के आधार पर तय होता था। अब मोदी जी ने पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस को एस्टैब्लिश किया है। परफॉर्मेंस के आधार पर ही देश की जनता तय करेगी। जो परफॉर्म करेगा देश उसको अधिकार देगा, जो परफॉर्म नहीं करेगा वो विपक्ष में बैठेगा। उस वक्त का 10 साल के बाद का विपक्ष या सत्ताधारी पक्ष भी हमारे परफॉर्मेंस के आधार पर ही देश की जनता तय करेगी। हम अच्छा परफॉर्म करेंगे तो हम अधिकार में होंगे। हम में पैदा हो रही बुराइयों को अगर हम कंट्रोल नहीं कर पाएंगे तो विपक्ष अधिकार में होगा। वो 10 साल के बाद देश की जनता है। मगर जी, 10 साल आपने पूछा है, इसलिए मैं मेरा एक आकलन कह रहा हूं, 10 साल तक तो मोदी ही है। हेडलाइन 10 साल तक मोदी जी हैं। ये बहुत बड़ी बात अमित शाह जी ने आज कही है, और हर बात जो कह रहे हैं बहुत गंभीरता के साथ और सोच कर कहते हैं। अमित शाह जी अपने शब्दों को बहुत मतलब सोच समझ के कहते हैं, ये इट्स अ वेरी बिग स्टेटमेंट। तो ये जो बात कही, इसके साथ अमित शाह जी, हम चाहते हैं, हमने कहा था आज कि जो हमारे सेशंस में आ जाएंगे उनको एक सेंस मिलेगा। और मेरा आखिरी सवाल ये होता है कि सरकार में कैसे काम हो रहा है अगले दशक के लिए। हमारी जो थीम है अमित शाह जी, इट इज भारत द नेक्स्ट डेकेड। और आपने परफॉर्मेंस असेसमेंट की बात कही। पहली बार हमें लग रहा है कि सरकार ऐसी बनी है देश में जो अपने परफॉर्मेंस को असेस करते हैं, जिसमें क्वार्टरली मीटिंग, डेली मीटिंग, वीकली मीटिंग्स, पीयूष गोयल जी भी बोलते हैं कि मैनेजमेंट, असेसमेंट, परफॉर्मेंस, की रिजल्ट एरियाज, KRA, इस तरह से काम हो रहा है।
तो आप अगर एक थोड़े एज एन इनसाइडर आप एक सेंस दे सके कि काम कैसे हो रहा है और किस विजन के साथ हो रहा है, तो विल बी वेरी ग्रेटफुल। देखिए, आजादी के अमृत महोत्सव का मौका जी। जब नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को मिला, तब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अमृत महोत्सव का उपयोग बहुत विजनरी तरीके से किया है। एक युग दृष्टा नेता ही ऐसा सोच सकता है, इस तरह से किया है। अमृत महोत्सव का उपयोग कर कर उन्होंने देश की नई पीढ़ी को आजादी के आंदोलन का पूरा इतिहास याद कराया। आजादी के आंदोलन के नेताओं का, जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व बलिदान किया, इरिस्पेक्टिव ऑफ पार्टी पॉलिटिक्स, उनका महिमा मंडन किया। अब तक 75 साल में हमने जो अचीव किया है उसका आत्मबोध कराकर देश की जनता के अंदर एक गौरव का भाव पैदा किया और 2047 में देश पूर्ण विकसित बनेगा, इसका लक्ष्य तय कर 130 करोड़ की जनता को अमृत काल में, मतलब 25 साल में देश को दुनिया में सबसे एक नंबर का देश बनाने का संकल्प लिलाकर एक पूरी 130 करोड़ की जनता को भारत निर्माण की यात्रा में जोड़ने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। आप मुझे एक दशक का पूछ रहे हैं, मगर मैं बताना चाहता हूं 25 वर्ष के बाद शायद हम तो नहीं होंगे, मगर इस देश के युवा होंगे। ये युवा देख पाएंगे कि हर क्षेत्र में भारत प्रथम होगा, भारत सुरक्षित होगा, समृद्ध होगा, पूर्ण शिक्षित होगा और पूरा विश्व जिसका लोहा मानता है, इस प्रकार के भारत की हम रचना करेंगे। और हमारी संस्कृति, हमारा इतिहास, हमारा धर्म, हमारी भाषा पूरी दुनिया के अंदर सम्मान के साथ देखी जाएगी। सबके साथ सह अस्तित्व रखते हुए हमारा जो पुराना है उसका गौरव भी हम पुनः प्रस्तापित करेंगे। ऐसे भारत की रचना ये 25 साल में करने का लक्ष्य मोदी जी ने रखा है, कोई एक पार्टी का लक्ष्य नहीं है। This makes Assam, in a very competitive federal landscape, one of the fastest growing economies in the country. So I think that's a huge achievement. And I am told that day after tomorrow, just outside Guwahati in Jagi Road, a 30,000 crore semiconductor investment is being made by the Tata Group in Assam. And I just turned the clock back, Himantoda. You've seen Assam. 10 years back, if you would mention Assam, people would say conflict, terrorism, lack of resolution, not a good place to invest. So you've changed things dramatically. Congratulations for that. Where do you see things go and how have you got here? I think those who have visited Assam earlier and those who will visit now, they will see a complete change. Assam is one of the fastest growing economy. So far as country is concerned, I think we are in the top 3 or 4. Our GSDP growth is around, we are constantly achieving 16 to 17% every year for last 3-4 years. Economy is going up. Then Assam was known for various law and order issues, right from the days of you can start from the day of India got freedom. We had Naga movement, we had got Mizo movement, floods, emergency, language movement. But last 3 years, Assam has not witnessed even a single band agitation. Absolutely peaceful situation. Recently, I have written a letter to 600 businessmen, those who have left Assam during the peak alpha period. I wrote a letter personally to them to come back to their original home. And I wrote it, I signed it to 600 persons who left Assam at that point of time, in those traumatic period of time. So things have changed, economy is doing good, political, social situation is good. And
Assam is, I can say proudly that as of now, you can consider that this is one of the best states when it comes to social harmony, law and order, political stability, economic stability. On 13th, Prime Minister is going to lay the foundation stone for the semiconductor industry, where investment will come from the Tata Group. So Assam will be the second state after Gujarat to have semiconductor industry in my state, back in my state. So those are huge things from our point of view, and I think we'll be stronger every day. How do you do this? Are you a likable person? Do people like you? Do you negotiate well? You seem to get your way with everything. Eventually, for example, you recently materialized a tripartite memorandum of settlement between the center, the state of Assam, and the ULFA. Now, many people felt this would not be possible. In fact, I had many members of ULFA who came to my studio. They had said, we will not surrender. We never will surrender. We will die, but we will not surrender. But while all other chief ministers failed, you managed to strike the deal. So, can you tell us about what is the art of negotiation when that happens? And why did this not happen earlier? First of all, Assam has seen a different kind of treatment from New Delhi, post 2014. Now, people realize that whatever apprehension we had, now it is not there. There was a strong sentiment in Assam that central government exploited its natural resources, and we have been pushed to the margin. Yes. In 1972, there was an agitation in Assam when Mrs. Gandhi tried to set up a refinery in Barauni, utilizing crudes from Assam. But now, day after tomorrow, Prime Minister is going to going to inaugurate a new pipeline where crude from Paradip will be pushed to Assam, and Assam refineries, refining capacity will be increased manifold. That we should be a net contributor to the growth of the country rather than being a dependent state. We should be a contributor state to the nation growth. So the perception in Assam has completely changed, and it is all along now hopes and aspiration. Would it be the same if Assam was not a BJP-ruled state? I think I'll not go back to the party, but this would not have been same if Narendra Modi would not have been the Prime Minister. That I can say confidently. No, but you didn't answer my question. My question was that would things have been the same if Assam was not a BJP-ruled state and Himanta Biswa Sharma would not have been in the BJP? See, Mr. Biswa Sharma, let me expand on this. Arvind Kejriwal said in February, just this last month, he said, and I'll quote him, the BJP has waged a war against opposition-ruled states. They have created an India-Pakistan situation with us. These are Kejriwal's words last month. The center is using all the tactics to harass the opposition government. Similarly, Pinarayi Vijayan said in Kerala, and I'll quote him, we are beginning a reunited fight that would herald the dawn of ensuring equal treatment to all the states. So we have lost a balance in center-state elections. That's the basic point that they're making. Arnab, if you are going to do such a huge excise scam, then should not be a war against the Delhi government by the central government? What is the demand of any Chief Minister of Kerala? Allow me to borrow money. Who will repay? So the question is that these people are accusing Prime Minister Modi because he is standing for justice, he is standing for transparency. Now, in Assam, if you come back to my state, let's go back to Assam. If you come back to my state, then if a Prime Minister starts visits to a remote northeastern state, which always seen trouble, twice a year, he starts spending his time for the development of Astalakshmi, knowing very well
that there is no much dividend he has to accrue in terms of politics because we have hardly 14 seats. So even then, Prime Minister is doing for the Northeast because we are in a frontline state so far as India-China is concerned, or a bordering state, or we can be in future a good center for entire South Asian state. Assam can be a basically nucleus for our Southeast Asian outreach. So when opposition state accuse, it is more on a political arena. But you have to analyze Prime Minister from his larger vision. Is it not Delhi who has able to host the G20 summit? Prime Minister could have taken it to Gujarat also, but he has done that in Delhi. Is it not indirectly helping Kejriwal in enhancing the stature of Delhi? So what he has not done, what Prime Minister has not done for the Delhi in last 6, 7, 8 years. अगर असम में इतना करते थे हम तो कहाँ पहुँच जाते थे. So you cannot, if a chief minister spend money for his own bungalow, 50 crores, 60 crores, then that is a personal issue. That is nothing to do with the citizen of Delhi. But so far as citizen of Delhi, you can change everywhere. The Bharat Mandapam is for the people of Delhi. G20 summit was for the people of Delhi. So everywhere Delhi is doing. Mamta says you're not releasing the funds. You're making it extremely difficult to release the funds. I think all these are political rioting. How can you not release fund? There is a set formula. The Finance Commission give you a set formula. Every month, on 10th of every month, central government release by 11 o'clock whatever dues to us. There is a set formula that this percent of the money will be devolved to the letters state. of usage from BJP ruled states? Would you think- demand I proof think of usage from BJP ruled states? Every morning. Are you put to the same kind of scrutiny that Mamta Banerjee There is? is no need of scrutiny. Every month on 10th or 11th, Nirmala Sitharaman or Ministry of Finance gives a tweet. She elaborated how much fund has been released to which state. And you will see that every states are getting money. I don't know what more money Mamta Banerjee are asking from Delhi. Whatever is due to us is religiously released on 10th morning by the government of India. Whether it is a Bengal, whether it is Assam, in one stroke, they release to all the states of the country. There is no such system in the central government that morning they will release to Assam, evening they will release to Bengal, next day they will release to Tamil Nadu. There is no such formula. Whatever we should get, we get it on 10th of every month in the early morning. I don't know what they are keeps on saying. And you call one day the opposition chief minister with us, then we will show them that whatever you are getting, we are also getting. There is no privileges. When central government deal with the state, it has to be based on certain formula. And people are getting money according to the formula. Hemantata, I have had the privilege of knowing you personally for a long time and I have watched your career. Now, you come across and everybody who's listening here, बड़े balanced व्यक्ति हैं, ठीक से प्लान कर रहे हैं, स्ट्रैटेजी है, असम की इकोनॉमी बढ़ रही है, मैं भी हिंदी में ट्राई कर रहा हूँ, कुछ ग्रामेटिकल मिस्टेक हो तो बता दीजिए. होना चाहिए मिस्टेक थोड़ा. तो मैं दिल साफ है, जबान साफ नहीं हो मगर दिल साफ है. तो मैं कहता हूँ कि लोग कहते हैं कि देखिए ये डुअल पर्सनालिटी है हिमंत बिस्वा शर्मा का. ये मैं let me explain that you have a dual personality. एक तो as a chief minister, very good, very rational, thinking ahead, inviting investment, talking to the right people. You know, you're running the state very well. But when it comes to, and I'll speak directly, when it comes to the Muslim community, then people feel you are anti-Muslim. Are you anti-Muslim? I mean, क्या आप anti-Muslim हैं? Let me, इससे मैं घुमा फिरा के सवाल नहीं पूछ रहा हूँ. आप देखिए, आप इसको सोच लीजिए. आप देखिए, I am anti OSC or anti Rahul Gandhi. But when it comes to the Muslim people, I'll request you, give me a camera and a cameraman. Let
us together travel to the Muslim population in Assam and you will see how much love and affection I have from them. नहीं, but that is जो तो आप कह रहे हैं. But आपकी जो विचारधारा है, see, I'm not saying, I am asking you, you don't be defensive on it. कौन सा विचारधारा? आपका विचारधारा जो आप कौन जो सा? बोलते हैं, बताइए जिस ना। तरह से बोलते हैं आप, जिस हम तरह से आप बोलता हूँ, बातें करते हैं, दो शादियां नहीं आप जो करना बोलते चाहिए। हैं, नहीं, आप बोलते हैं मदरसा बंद कर दो, बंद करो ना। मदरसा बंद कर दो. नहीं, हमेशा हर जगह जाके किसी और को ठेस देना और कहना मदरसा बंद कर दो. आसाम के पॉपुलेशन में कितनी परसेंटेज मुस्लिम, मोर देन 30%. आप जाके बोल रहे हैं मदरसे बंद कर दो. आप देखिए, मतलब आप किसी को नहीं, आप मुस्लिम बोलने से किसको मानते हैं? मेल एंड फीमेल दोनों को मानते हैं? मुस्लिम, हाँ जी, मुस्लिम मेल और फीमेल दोनों को मानते हैं ना? ऑब्वियसली. तो मैं जब बोलता हूँ कि भाई आप दो शादी मत कीजिए, तो मेल नाराज हो जाते हैं, फीमेल तो खुश हो जाते हैं ना. हमें जब जाके बोलता हूँ कि आप तलाक मत करवाइए, आप सब्सिस्टेंस दीजिए, कोर्ट से जाके आप डाइवोर्स लीजिए, माँ तो खुश होता है ना. एट द एंड ऑफ द डे हमारा तो जन्म माँ का कोख से ही तो हुआ है ना. आप देखिए बात को घुमा रहे हैं, आप बात को घुमा रहे हैं. मैं नहीं घुमाया. तो वो हमारा वो जिंदगी, कहेंगे मेरी मर्जी है. हिमंत बिश्व शर्मा हर दिन सुबह हमारे एक कस्टम को अटैक करते हैं. नहीं, ये कौन सा कस्टम? किसने बनाया हुआ कस्टम? कुरान ने तो ये कस्टम नहीं बनाया. होली कुरान में ये कस्टम नहीं लिखा गया है. ये कस्टम, ये 200 दलाल जो होता है वो बनाने वाला कस्टम है. जो कस्टम हजरत मोहम्मद बना के गया है, कुरान शरीफ में है, इसको आप सम्मान करना चाहिए. एंड वन शुड रेस्पेक्ट द होली बुक्स ऑफ एवरी रिलीजन. लेकिन जो बीच का दलाल लोग हैं उनका आप क्यों इतना मानते हो? किसको आप दलाल? जो लोग बोलते हैं कि मुस्लिम बहनों का तलाक का बाद उनको सब्सिस्टेंस नहीं मिलना चाहिए, ये किसने कानून बनाया? ये कानून किसने बनाया? ये कानून तो कोई रिलीजियस टेक्स्ट में नहीं है. ये कानून है असम मुस्लिम मैरिज एंड डिवोर्स रजिस्ट्रेशन एक्ट ऑफ 1935. कानून मेरा असेंबली ने बनाया था, मैं असेंबली में ही खत्म कर दिया. आपके जिसने बनाया उसी ने खत्म कर दिया. तो अगर कोई कहे, हेमंत दादा देखिए, अगर कोई कहे ये अप्रोच जो है, नहीं जो एक मिनट, ये जो अप्रोच है, सॉरी मुझे ये एक मिनट, नहीं, देखो थोड़ा सा मैं आपको एक बात अप्रोच है. आप बोलिए, मैं आपको एक मैं मेरी बात बोलने दीजिए. ये जो मुस्लिम रजिस्ट्रेशन कानून था, मुस्लिम मैरिज एंड डिवोर्स रजिस्ट्रेशन एक्ट 1930, ये हजरत मोहम्मद ने नहीं बनाया था. ये शायद सर मोहम्मद सादुल्ला ने बनाया था, जो सीएम था जी. तो मैंने सादुल्ला का कानून को मैंने निरस्त कर दिया, लेकिन आई हैव नॉट टच एनीथिंग ऑफ होली कुरान. मगर आप ओवरनाइट नहीं कर सकते ना. वो कहते हैं आप एक में बात करने दीजिए, मैं उनकी बात रख रहा हूँ, ये मेरी बिलीफ नहीं है, ये कोई गलत फहमी नहीं हो लोगों में. वो कह रहे हैं कि ये तरीका होता है. एक मिनट मेरी बात सुनिए हेमंत. एक तरीका होता है, एक अप्रोच होता है. ये हिमंत बिश्व शर्मा का अप्रोच अनडेमोक्रेटिक है जो चल रहा है. हमें बुलाइए, हमसे बात कीजिए, बदरुद्दीन अजमल को बुलाइए, उनकी पॉलिटिकल पार्टी है, लोगों से बात कीजिए, कमीशन लगाइए, लॉ कमीशन लगाइए, रिकमेंडेशंस लीजिए, तरीके से बात कीजिए. ये जो आपका माय वे और द हाईवे अप्रोच हो गया, नहीं माय वे और द हाईवे अप्रोच जो आपका है, जो है वो लोग कह रहे हैं आप कर रहे हैं, क्योंकि मैं खुल कर कह रहा हूं आप पोलराइज करना चाहते हैं वोट को. देखिए, यू वांट टू पोलराइज द वोट. I'll tell you. Is it? I'll tell you 2.3 point clearly. ये कानून में क्या लिखा था कि छोटे बच्चा का भी विवाह होते हैं तो जो काजी बोलते हैं दे कैन रजिस्टर द मैरिज एंड दैट मैरिज बिकम लीगल. ये कानून में वो लिखा हुआ था. हमने जो बाल विवाह का खिलाफ काम किया, हाई कोर्ट एनलर्ज मेनी ऑफ देम ऑन बेल, saying that in Muslim registration act, registration of child marriage is genuine and it is a bona fide, it is legal, so you cannot arrest. So then हमने जाके कानून को जो असेंबली ने पारित किया था उसी असेंबली से हमने खारिज किया, और बाद में खारिज करने के बाद सबसे तो मशवरा होते ही रहता है. खारिज करने के बाद आप बात करेंगे. ये ऐसी बात होगी कि 370 निकाल दीजिए, उसके बाद आप बुलाइए हुर्रियत को, बात कीजिए, पहले बात मत कीजिए, कंफ्यूज हो जाएगा. अब व्यूअर्स, दिस इज, I mean, we are talking about Bharat, the next decade. आप कभी भी
जब निर्णय लेना होता है, अगर 370 कानून को खत्म करने का पहले अमित शाह जी सबका साथ चर्चा करते थे, क्या 370 विलुप्त हो जाते थे? ये कोई बात आप कन्विक्शन और प्रिंसिपल में चलो कि ये देश में चाइल्ड मैरिज नहीं होना चाहिए. That is the main conviction. Once you have that conviction in your mind, रास्ता में जितना भी रुकावट है हटा के चला जाओ. और कोर्ट में चली जाए बात, कोर्ट में चली जाए तो कोई इशू नहीं है. आपको कन्विक्शन, कोर्ट्स तो हर चीज में घुस रहे हैं आज. नहीं, देखिए कोर्ट का अपना एक अंदाज है. हम कोर्ट का बात कोर्ट में डिस्कशन कर लेगा, आपको तो वो कोर्ट में चलेगा. बट आपको एज ए, मेरा जो मानना है कि हमारा पहले कन्विक्शन होना चाहिए कि 370 जाना चाहिए. फिर अगर आप वो कन्विक्शन में फार्म है तो कैसे जाना चाहिए लोगों को मत बुलाइए. खत्म करने का बात बुलाइए, भाई खत्म कर लिया अभी बात करो कैसे क्या आगे करना है. This is a remarkably unique approach. नहीं, वही न्यू इंडिया है. हाँ, this is the new India. न्यू इंडिया. यही न्यू इंडिया है. I tell you, this is the different level of political incorrectness. देखिए, but I like your style. देखिए जो भी है बोल रहे हैं, ये नहीं कि इधर भी उधर भी थोड़ा इधर. लोग बोलते हैं कि चर्चा करो. हर किसको चर्चा करे? When you know their point of view, हम हमारा point of view जानता है, उसमें तो कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता है ना कि ठीक है आप 18 साल छोड़ दीजिए, 16 साल में रजिस्टर करवा लीजिए. कोई बोलेगा 12 साल, कोई बोलेगा 18 years, then you come into compromise of 16 years. ऐसा डिस्कशन नहीं होता. यही गलत है भारत का. आप पॉइंट ठीक कर लीजिए कि ये देश को विश्वगुरु बनाना है. ऑन दैट वी आर यूनाइटेड. जब बनाना है तो मोदी जी को छोड़ दीजिए ना, बना लेगा. तो फिर आपका साथ चर्चा करने आपका स्टाइल कुछ अलग है. देखिए आपको मैं बता रहा हूं, राहुल गांधी जी आपके दोस्त आए आसाम में, और आसाम आपने कुछ, आपके झगड़ा हो गया, आपने उनको रोक दिया, आपने उनको जाने नहीं दिया, ये वो. उन्होंने आपको कई कॉम्प्लीमेंट्स दिए. उसके 2 दिन के अंदर आपने पूरे कांग्रेस पार्टी को बीच से तोड़ दिया सामने, और आपने कहा ये मेरा रिटर्न गिफ्ट. यू सेड व्हाट इज इट? इट इज माय रिटर्न गिफ्ट टू कांग्रेस. ये बात बोले, रिटर्न गिफ्ट ही बोलिए. बर्थडे में गिफ्ट देने से आपको यू गेट अ रिटर्न गिफ्ट ऑल्सो ना. क्या चल रहा है आपके? आप देखिए, राहुल लॉन्ग राइवलरी. मेरा बात अलग था. मैंने राहुल गांधी जी को बोला था, आई हैव रिक्वेस्टेड हिम थ्रू डिफरेंट चैनल, कि जब राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा है, प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है, वो समय आप आसाम का मंदिर में मत आइए. देन इट लुक्स लाइक देयर इज अ कंपटीशन बिटवीन राम एंड श्रीमंत शंकरदेव. I made him a very, very bona fide, genuine request. Please avoid 10 to 12 p.m. When there is a Pran Pratishtha Mahotsav of Ram Mandir, you do not enter Ma Kamakya temple, or you do not enter the Bhattadrova Satra. Come after 3 hours. He become arrogant. नहीं, हम उसी समय जाएगा. हम बोला चलो, अभी देश के गांधी का शासन चल रहा है, क्या हमने थोड़ा दिखा दिया है कि ये अभी देश गांधी का अंडर नहीं है. This is a big statement. No, arrogancy has no place when it comes to Ram Mandir, when it comes to हमारे आस्था. अगर मेरा घर में कुछ था तो आप कर लो, मेरा कोई आपत्ति नहीं है. But you cannot put Ram against Assam. You cannot put UP against Assam. You cannot put Ajodhya against Srimant Shankardev. Those are bad tricks he wanted to play. So मैंने आप बोला कि आपको आसाम आने का इतना सखी है. After लोकसभा इलेक्शन में आपको आसाम बुलाता हूं. इनफैक्ट पुलिस has given him notice also. He will come back to Assam. Let him then visit every temple. But ये गांधी वाला रूप नहीं चलेगा. आप उनको इनवाइट कर रहे हैं और ये भी बोल रहे हो the moment he comes आप उनको अरेस्ट करेंगे. वो भी तो जेल भी तो एक देखने का ही चीज है ना. उसमें क्या है? ये थोड़ा सा देखिए, लोग पॉपुलर है, मुझे पता है, सब इधर ताली लगा रहे हैं. आपका और योगी जी का स्टाइल जो है ये बुलडोजर टाइप का अप्रोच है. कोई बुलडोजर नहीं है. जेल क्या? कैन आई पुट इनटू एनीबॉडी जेल? द कोर्ट विल पुट इनटू समबॉडी जेल. मैं तो जेल में डाल ही नहीं सकता हूं. तो इफ समबॉडी गोज टू जेल आफ्टर लीगल ऑब्लिगेशंस, लीगल प्रोसीड्यूर, तो उसमें हाउ कैन वी स्टॉप इट? आपने असम जाके यू ट्राई टू ब्रेक लॉ एंड ऑर्डर. मैंने आई विल पुट ए चार्ज शीट इन द कोर्ट. इफ कोर्ट पुट यू ऑन द जेल, हाउ कैन आई हेल्प यू? आई एम नोबडी. चीफ मिनिस्टर कैन नॉट कंट्रोल कोर्ट.
वो तो एक serious question. It's a different approach. I mean, this is the approach, and he says this is the approach of New India. The response seems like you are getting more popular with these things. No. No, I don't have any problem with that. I also have this approach. No, this should have been approached before. That's good. No, I अगर ये अप्रोच हो जाते थे तो आपका राम मंदिर 75 साल पहले हो जाते थे. मतलब people has to be decisive. नहीं तो काम नहीं होगा. You have to be decisive when it is a conviction. The conviction is shared by the people of India. Then you don't stop. I understand. You have worked very, 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 very hard to bring the Northeast completely into the mainstream. If there is one leader in the last few decades who has removed to a large extent this sense of alienation of the Northeast, the word alienation in the Northeast, earlier in 1980s, MPs from Assam would always come and say, Center, please give us royalty, please give us royalty. That's changed. Was Manipur a setback? I'm asking a straight question on Manipur. Because you said in August 2023 that the situation from Manipur will only come from the heart and not from bullets. And everybody is aware he's the chairman of the Northeast Development Alliance, a congregation of all the NDA parties in the entire Northeast, not only Assam. Now, there was a narrative during the crisis in Manipur, which is a serious ethnic crisis, that the BJP failed. And they said the Manipur crisis reveals the limits of BJP's politics in Northeast. There was an ethnic crisis in Manipur, but it was used to say the entire approach to Northeast, the lookist policies of the Modi government has failed. First, how do you react to this typecasting? B, was there any mistake made in Manipur, and is there a solution in sight? You see, every states of Northeast are not same. Yes. So, in the Manipur crisis also, the crisis is between the two communities. But the most important fact, you will not heard even Meitei criticizing BJP, Kuki also not criticizing BJP. Because they have reconciled to the fact that it is our issue, and when they met us, they said that we are not in a happy mood, but kya kiya jai, this is our issue. What are you maintaining back? I'll tell you. Suppose now government of India is saying that we are going to fence Indo-Myanmar border. Right. Now, on this, Meiteis are welcoming, but Naga, Mizo, and Kuki are opposing. So, because they have their people in the Myanmar and they want a free movement. There are a lot of contradiction in the Northeast. And these contradictions are not creation of BJP. These contradictions are there from the beginning. So, you are trying to resolve one contradiction after one contradiction. We have resolved Assam. We have resolved Arunachal Pradesh. We have resolved Meghalaya. We have the Mizoram. It was peaceful. It remained peaceful. But the contradiction or the problem in Nagaland, in Manipur, it is there. Nobody is denying. But the problem is, you can see the love and affection for the Modi. When national media is playing out the Manipur story, have you ever seen any credible Meitei people criticizing Prime Minister Modi? Have you seen any credible Kuki people criticizing Prime Minister Modi? So the people in Manipur realize that this is not a problem against central government. This is our own internal problem, and I feel that this problem will also be resolved. But it has nothing to do with the BJP. It is not that BJP has suddenly announced certain ordinance, BJP has suddenly passed a bill, or BJP has started a policy decision. That is why the contradiction has erupted. Contradiction is there since hundreds of years. And these are tribal community. Yes. And tribal community has their own way of putting things into race. They will develop their internal strength to bring solution. Third party hardly has any role. I have both friends in Meitei and Kuki. What they advise me whenever I visit Manipur, Dada, you please stay out. You please stay out. You please stay out, because you stay? they don't want any intervention from the third party.
Okay. They want, the tribal people are of that kind of, tribal people has their own strength. They have their own way of looking at things. And I am sure that what we should do, we should strengthen both Meitei and Kuki so that they can resolve the dispute in between them. From outside, you can maintain law and order, but you cannot bring solution because tribal people will not allow it to be resolved by the third party. It's a very different society, yeah. difficult society. I agree. But in Manipur, even many people went there and tried their level best. But nobody is issuing a single statement against Prime Minister Modi or Home Minister Amit Shah. That is the most important thing. Yeah, because people has no grievances against Delhi. No, I think that I agree with you. One thing, being from Northeast myself, that the analysis of Manipur is oversimplified sometimes. Whenever people I don't see even it understand in the TV, complexities. it is 100 years of struggle Yes. between the two community, and people simplify. Modi kya kar raha hai? Modi kyun wahan nahi Correct, jate correct. I hai? get It is not the solution. If the solution would have been that simple, It would have been, then we would have got relative peace much before. So how many seats do you think the Congress will get in this upcoming election? How many seats will the Congress get in 24 in your view? इंडियन क्रिकेट टीम में कितना प्लेयर होते हैं? तो my own wish that they should be reduced to a number of Indian cricket team, but I am sure my wish will not be fulfilled. They will be around 30-40. 30-40. मेरा Just तो मन 30 है कि 15 तक सीमित जाना चाहिए, with extra man 12 men इतना ही होना चाहिए, but नहीं होगा. They will go up to 30-40. 30-40 makes them a regional party. Is that a good thing? They are already a regional party. It will be now segregated. I am making a prediction. Yes. After staying that party for 22 years, post-election, many of the state unit will declare that they are the Kerala Congress, they are the Punjab Congress, they are the Tamil Nadu Congress, they are the Assam Congress. You are not only seeing the declining of Congress, you will also see end of family politics after this election. I think this is the last election where that family cards will be played out and they will be You're defeated saying like last anything. election for the Vadra Gandhi family. No family politics will now survive in this country after this election because that will be third consecutive blow. And the family, none of this family has the guts to face third consecutive blow. I feel whether it is in UP, whether it is in Bihar, whether it is in Delhi, all the family politics will come to an end. A new politics will emerge where people will compete for development. Who has built how much kilometer of roads? On that basis, election will be conducted. So, ये मैं गांधी का फोटो देख के वोट देता हूँ. आप इंदिरा गांधी जैसा सजा लो तो आपको वोट मिलेगा. Those kind of things will be now history, and India will enter a new era post this election. I am told all the opposition leaders also like you. And you are involved in many discussions. So are there any more alliances that BJP will announce? Like we're hearing about possible alliance with Biju Janata Dal in Odisha. Which are the other alliances that you will possibly enter just before or after the model code of conduct is announced? Because now it's 7th of March. My wish will be, what is your wish? Except the political parties which are run or decided by a particular family, everybody should join hand with Prime Minister. Because you have to build a India. You have to build a new India. So if we have to go beyond 400, all are run in that if way. you have to go beyond 400, I think all like-minded people has to come. Who will you go with? NDA. You'll go with Chandrababu Naidu or Jagan in Andhra? देखिए, my brief is not to go answer into this, but Akali, Badal, but that's also family run. चलिए 400 तो पार कर ही लेगा. So you put the now accounts. But alliances बाकी हैं. 400 पार होने के लिए what are the things? Because the seeds has to come from the state. 400 पार के लिए और alliances की जरूरत है. मेरा इतना ही जो थोड़ा मैं देख के बता सकता हूँ कि the strategy is still what we are seeing. It is still at maybe 75%, 60%. Lot of things are going to happen in days to come, and I believe many people will come to BJP and NDA. That is my belief.
I am not part of any discussion, but मैं दिल से चाहता हूँ कि सब लोग आके प्रधानमंत्री मोदी जी का साथ जोड़ जाए. That's fantastic. Lastly, Revantada, in last couple of minutes, because we are talking about Bharat the next decade, हिंदी में या इंग्लिश में, आप अपना विजन बताइए अगले half decade, 1 decade की लोग बहुत excited है, because what we are seeing today, people earlier used to say 30 years from now, 40 years from now, we will build a dam. Now people are talking about things being done next month, in the next 6 months, performance metrics. So give all our viewers your view of where Arnab, the country and Arnab, the state will be. you just watch certain things. अभी प्रधानमंत्री जी असम गया था 10 दिन पहले. He inaugurated project worth 16,000 crore. Day after tomorrow, he will again go to Assam. He will inaugurate a project worth 16,000 crore. Yes. On 23rd, he will lay the foundation stone for 30,000 crore investment. He went to Jammu Kashmir. You have seen similar kind of investment. Wherever he is visiting, you are seeing that what kind of development is taking place. Now, Congress is not questioning the number. भाई ये 16,000 जुट है बताओ. They have no statistics. They have nothing to challenge the development journey of Prime Minister. They have accepted कि भारत में विकास हुआ है. अभी हम विकास का पीछे नहीं लगूंगा. We admitted and Modi ji has done lot of development. भारत का लोगों को विकास का बात अगर छोड़ दीजिए, हमें और क्या चाहिए? हमें तो कुछ चाहिए भी नहीं. हमें तो विकास ही चाहिए. तो प्राइम मिनिस्टर हैज प्रॉमिस विकास एंड बहुत बड़ा विकास. मैं तो मानता हूं कि ये 10 साल में जो हुआ है, ये तो खाली एक थिएटर का पहले थोड़ा दूसरा फिल्म का क्लिप वगैरह निकालता है ना, ही है. हमें तो पिक्चर, मेन पिक्चर अभी बाकी है. We are yet to see the best from the Prime Minister. Well, thank you. Imantada, I have really enjoyed the session. You have invigorated the crowd, and I wish you good health. And tomorrow, Prime Minister is coming. You're receiving him. He's going straight there to make the preparations for the Prime Minister's visit. That you took the time, despite the so much work. Thank you very much. Thank you. असम का रिप्रेजेंटेटिव है. आपका हमें तो आना ही है मुझसे. Thank you, Imantada. You're very kind. Thank you very much, Chief At the Republic Summit and for lighting the lamp, but the nation wants to know. The nation wants to know whether it's true that you are fighting the next Lok Sabha elections from Mumbai. So let's start with a political question. In fact, at the WTO Director General gave it away when he said, why is Piyush Goyal not come for WTO yet? So he says, you see, he's very busy. He's fighting an election. So they've announced it even before the BJP at the WTO. So maybe you want to tell me We've been that. fighting elections ever since the day I was born, probably. The Lok Sabha election. But I think these are decisions the party takes. We have a party parliamentary board which makes all these decisions. I can only tell you I would love to fight the election. Oh, great. If the party gives me an opportunity. Great. That's a good headline to start with. Piyush Goyal says he's going to be excited to fight the election if the party gives him an opportunity. Fantastic. I actually like this, that, you know, in the Congress time, everybody was only from the Rajya Sabha. I think the next time, almost most of the cabinet will be from the Lok Sabha. So that's going to be very, very exciting. Congratulations in advance. Mr. Goyal, your party has set a target which seems to be going up. You know, you used to predict 335 to 340 till 6 months back. And now your party has estimated a number of 370. Is this 370 number a psychological tactic or more than that? Is it a psychological tactic vis-a-vis the I think it's a others? courage of conviction that what we have delivered in the last 10 years is being appreciated by the people of India. And it is our confidence, not arrogance. It is our confidence that ये जनता सब समझती है. भारत की जनता जानती है उनके लिए अच्छा क्या है और भारत के लोग सही और गलत के फासले में इस देश को बहुत अच्छी तरीके से You think it's achievable? आगे बढ़ाएंगे. You think it's हाँ, achievable? हाँ, हम You 400 mapped it. पार एज एनडीए और 370 एज बीजेपी पाएंगे. पूरी तरीके से अचीवेबल है. और मैं समझता हूं कि आज जो मूड ऑफ द नेशन है, जो इस प्रकार का देश में माहौल है, उसमें इट्स 100% अचीवेबल. Absolutely. Well, we're all waiting to hear the Honorable Home Minister who's going to be coming in next. We'll talk more politics with him there.
Mr. Goyal, under your government, the economy is on track to reach a goal of 5 trillion by 2027. And we've got a great growth rate of 8.2% in the last quarter. So congratulations for that. But your government is still, our government is still in a way unable to convince your biggest critics. So my question is about the narrative. The narrative from the naysayers is that the growth is not for all, the growth is for few, that it's the macro, it's the macro taking a dim view, but individual level change for the people of the country is not happening. We are still not doing well on the global hunger index. Things like that, that our per capita income is still around $2,000. So there's nothing to celebrate yet. So, do you believe somewhere that you need to more strongly counter this narrative? Do you have plans for it? Do you intend to do it? Well, I think this question can best be answered by the 4 crore families, which is almost 20 crore people, who are today living in a pakka house that the central government has provided for. I think this narrative can best be countered by the 80 crore brothers and sisters, some from poor, some from the neo-middle class, whose food security is assured because they get free food grains month in and month out through years, particularly during the COVID period when we had doubled the food grain that was distributed. This narrative can best be answered by the 55 crore plus beneficiaries of free health care under the Ayushman Bharat scheme, or the 11 crore plus sisters and mothers who today don't have to use a wood or coal-based chula, but have a cooking gas connection. It can best be explained, I think, to the naysayers by the 11 crore 20 lakh families who didn't have a toilet at home. And personally, that's the one subject that has touched me the most, that Honorable Prime Minister, as soon as he came into office, his focus was on Swachh Bharat, his focus was on open defecation-free India, and his focus was that every woman, or for that matter, every person, has a right to dignity. And he spent large amounts of money to make sure that everybody gets a toilet at home. I think the naysayers have no choice but to take sense what's happening on the ground, where people have benefited from the 3 tracks that I just mentioned. Yes. After all, infrastructure has a huge multiplier impact on the economy, gives jobs, gives economic activity, all of which supplemented with social welfare programs, only some of which I listed out. The encouragement to young entrepreneurs through mudra loans, to the startups of our young men and women. I can list out maybe 100 programs right now which have helped change the mindset of India. पर एक पुराना गाना है ना, समझने वाले समझ गए, ना समझे वो अनाड़ी हैं. I didn't say that. I said it. I go for the kill. I go for the jugular. I'm not a politician. I'm not a diplomat. I'm very used to that. I've but had to face you Then it's- for the last 15 years now. Now you should also go for the jugular since you're going to be fighting the Lok Sabha elections. You just go for the kill. See, I have this view, Mr. Goyal, that there is a romance going on between India and the world right now that is not going to last. And I believe we should be very clear about the future where things are headed. You know, this whole line, we are working with the whole world. Look at how we managed Ukraine. We managed to work with America. We managed to work with Russia. We managed to work with Europe. Europe is becoming insular. But then I believe this romance will not last, and you can counter this because as we grow from 3 to 5 trillion, 5 to 8 trillion, and you yourself just said we will 15 trillion by 2035, we will not be an object of curiosity. We will be a serious competitor, and I believe a little bit of that wrinkle, that tension, that stress showed up at the Abu Dhabi WTO meeting, where you held on to the position that Indians on fisheries, farmers, we cannot compromise. You were pushed back. Some people say you're wrecking things. So I'm saying
my view is, and I want a complete answer to this, they will accuse us of more protectionism. They will say, why is Elon Musk not coming to India? And you will say, we have enough manufacturers for e-vehicles in India. You will say, come to India on our own terms. They will say, we want their terms. So, and if Donald Trump becomes president of the United States, you know how aggressive he is. How will we manage this? Do you see the stress on trade and economy growing between India and the rest of the world? Absolutely not. You don't? Fact, I think this is Arnab at his old aggressive best coming out today. But I'd like to join issue with you on that. First of all, it is difficult for somebody who's used to being a superpower, who's used to being on top of things and dictating to the rest of the world. It's very difficult to reconcile on the changing geopolitics that's evident in the world today. So we had a situation where India, at the Uruguay round, when GATS or TRIPS were being negotiated about 40 years ago, Yes. we were a weak country. We compromised on many things. And I don't think the then government, irrespective whichever party was in government in the 80s, they could never visualize an India of 2024. They could never visualize that India and Indians will start asserting themselves. They could never visualize that India could also aspire to become a developed or a prosperous nation. And therefore, many wrongs, many decisions were made at that time, which we are fighting for today, where we are holding our ground, where we are working with other developed nations, and we have a very good coalition of the global south. Yes. And Prime Minister Modi has led from the front. He's got the African Union full membership of the G20. The entire less developed countries and developing world looks up to Mr. Modi's leadership today. And they look up to India holding the ground for what is good for them. Sometimes, even the less developed countries or countries who are not yet up the prosperity chart, particularly the small countries, do not realize that they're going down a path which may seem okay for the present, but can be very dangerous for them. And I think India plays that role of balancing the interests. We want all the countries to grow with the developed countries. At the same time, the developed countries are also gradually reconciled and recognizing that economic opportunity and business is only possible with a developing country like India. Somebody where there's 1.4 billion people, largely young people, 2/3 of our population in the working age, where the demand for goods and services is going to come from. So I think India offers a perfect opportunity to be friends with, to work with, to engage with as a democracy where the rule of law prevails, and the world is recognizing that. So while there may be some trepidation, some difficulty in accepting it, I think there is no choice but to work closely with India, and you will see in the months and years to come, more and more partnerships being forged, more and more relationships being developed between India and the developed world, particularly the developed world which believes in the rule of law, transparency, and ethical business. I thought there was a lot of stress. I thought you were not getting any hugs and handshakes when you went for your global events. They looked at you with trepidation. Not at all. I'm received very warmly. I have some wonderful relations across the world, as does my colleague Dr. Jaishankar, who's truly showcased to the world Absolutely. the India story like never before. Absolutely. Absolutely. I call him the rock star. You have. That video went viral. And truly, he makes each one of us Indian proud. The way he presents the India story, Yeah. the way he stands up for what India is Yeah. doing. And I can only tell you, commerce and foreign ministry Yes. are today Working very working closely. literally as twin ministries, very closely aligned with each other. Messaging goes on between him and me literally by the minute. Wow, wonderful. And I can assure you that under Prime Minister Modi's guidance and leadership, both are working in an aligned manner to get the best for every Indian. So I said to everyone coming to this event today, I said you should come for the event
Because if you spend half the day, one day with me at the event, you will get some sense of what is going to happen in the next half decade. We so called it the decade. And I believe that is what we want. You know, we go back into our lives. Somebody called me, oh no, what is in it for me? I said, you do your job every day, you do your work every day. Spend half a day, one day on where the country is going. You'll go back more inspired in your jobs. So my last question to you is this. Just 2 minutes if you can give me a sense. You know, you mentioned trade. You know, we are working very hard, for example, on the India-Middle East-EU economic corridor. Give us some sense of what we are going to see in our lifetime in the next 5 to 10 years. You know, what is that in the next decade, in a couple of minutes, from your insider's perspective? What are people going to see? Well, I think in the next decade or so, we'll see a lot of technologies and investments coming from across the world to manufacture in India, which will provide economic activity, jobs to our young boys and girls, which will also provide our young startups with opportunities to innovate on their own ideas. Yes. And this will be necessary for the developed world Yes. who are looking for a trusted partner. Yes. And today, for most parts of the developed world, in Europe, in the United States, in the Middle East, Yes. large parts of Eastern world like Australia, Japan, Korea, Taiwan, they are all finding in India a trusted partner, a country where the rule of law prevails. And this is going to drive huge amounts of investment and technology, which will not only serve the needs of a growing aspirational India, which will also be the sourcing base for the world. Case in point could be, I think, Apple. Apple started with very small beginnings. Oh yeah, that's They're a big already at story. 7-8% of their global production coming out of India. Absolutely. Next 2 years, they expect to take it up to about 25% of their global production. And the story across the world, wherever we go, people are telling us our largest workforce today is in India. Our second largest is in India, but in 2 years it will be the largest. Our R&D all comes from India. Our innovation is happening in India. So by and large, across the world, there's a lot of excitement about engaging with India. Yeah. And I can assure all your viewers through you, as we do in Parliament, Yes. that be bold, Yes. go for the big ticket, big vision. Yes. Don't ever compromise for second best. India is going to be on top. We'll provide the best quality of goods and services, highest level of management talent, best skill sets, and integrity and ethics in workplace, which will be unparalleled anywhere in the world. That's so important. Well, I'm full of positive energy after this. And, you know, I love the fact that nowadays, when a minister reaches for an event, till the last minute he's checking a file, till he's got 2 phones. So he works incredibly hard, but he still gave us time. And we are proud of you. In all of them. I think the space sector has been one torchbearer in showcasing an example to this country that it is possible for India to make his own path, her own path in the domain of space technology, to do it in different manner than that others did. I think all of you know the history of our space domain has been different from other nations. Where the many other powerful nations started the space program by developing the arsenal in their stock and slowly moving to the launch vehicles, the satellites, and the applications. And we went in a different direction, bringing about applications first and then creating the capability for launching and deploying them later. And similar example has been seen in the missions like Chandrayaan-3. We were able to engineer a mission with very, very low budget, I must say, not really an approach which is very, very innovative, using a launch vehicle capability which is just available there for you to do the mission, and then the mission strategy and planning to reach you up to the moon and land it very, very carefully, where others have difficulties during this time frame. So it showcased the capability within India to do such missions. So what I foresee in the next decade is that we should be able to develop an ecosystem of technology implementation for the life of every Indian citizen in a manner that other country has not yet done.
Mr. Somnath, there are few images that every Indian, perhaps in this room, will never forget. Images of rockets being brought on a bicycle. Then you have had bullock carts that were used to move around. And of course, every Indian was aggrieved when there was this cartoon that was put out by the Western media, that elite club. I would say, and every Indian in this room would say, that today ISRO has smashed the door of that elite club. And if it is possible, it's because of you and your team. So I want to ask you today, take the opportunity of asking, what is it that you would tell those who try to demean Indians, and how has the journey been? The journey, I would say, is fantastic, but we want to hear it from you. What's been the journey for you and your team? See, for people like us in the space domain, the technology domain, I think those narratives were entirely different. I think those cartoons that you are referring to are in another sector of the society, section of the society. We don't understand each other, I must tell you. We people in the space, we have been talking to all the power players in this domain, the Russians, the Americans, the Europeans. And possibly you may know that Sarabhai, when he started the whole space program in 60s, we were nowhere. We were just launching small rockets. But he was able to influence the Russians, the Americans, and the French and bring the rockets during the ages of the Cold War to India and then make a launch from here. The rockets came from the US, the computer came from Russia, the infrastructure for that came from France, and we were able to integrate all of that and then make a launch. So that's the power of that he displayed at that point in time. And we continue to do the same. Even today, they respect us very well. And though those ridiculing that is happening in some other sector of the society, I think let us not worry too much about it. Those who understand the domain respect each other. And there is great amount of respect even during the times of Chandrayaan-3 from NASA, from the Europeans, from the Russians. And they have been calling and telling us, and they have been sending us congratulatory letters for the accomplishment that we have. So we always had a very high level of recognition and respect from all those who have new space technology. Talking about some of these specific projects, missions that are coming in, I think so every Indian would be very excited when the Prime Minister actually spoke about, announced the names of the 4 astronauts, and everyone wanted to know who they are, the journey it has been, because a lot of people do not know that during this entire mission, the kind of hurdles that ISRO had to face, COVID pandemic being one, Russia-Ukraine war being the other. What is it that we are really looking at, Mr. Somnath, in terms of the Gaganyaan mission, because everyone would want to know about it? I must tell you that the Gaganyaan program is something quite different from a typical rocket launching and putting a satellite in orbit. So we are dealing with human beings now. And the complex nature of dealing with human beings out inside. And the whole technology is not forthcoming. And we were asked now to develop our own environmental life support system. And there are many elements like this. The spacesuit, the crew escape system, the computer system which will find out whether there is an anomaly going to happen in the rocket and then take an action for aborting them. Training, simulators, the medical capability that we have to understand the physical, the physiological and the psychological aspect of an astronaut and select them and manage them. I think all these skill sets we were not having, I must admit. And we thought that we can always go there and get help from many, many people. And of course, they are helping. But many of those help will come at a cost and at a time they decide. I think that doesn't go with us. Our schedule. So our original schedule of meeting the goal of having the human space mission is affected definitely by the availability of this knowledge. So we decided that anyway, the time is lost because of the COVID. Of course, COVID created a little bit of disruption in terms of manufacturing, getting many of the materials. We have to buy quite a bit of complex electronics parts and many other materials from the foreign sources, and they were not forthcoming. And some of them we had to do it our own way of doing things. So now we have reset the timeline for the first launch of the crewed mission to 2025 end. And this year we are trying to complete all the development activities of all those systems which I just mentioned. Then conduct unmanned or uncrewed missions, at least 2 of them, or maybe 1 more. Then also demonstrate the abort scenarios, which one of them which we have just done. Then also do hundreds of similar tests in this year and early next year to give the confidence to have the crewed mission by the end of 2025. So I must tell you at this moment that it's a really challenging enterprise.
first of all, we have no experience of sending human beings to space till now. And we are talking to those people who are in this domain, like our Rakesh Sharma, who had the fortune to travel in one of the mission. And he is one who gives us a lot of information from his perspective of understanding. But there is different layers of understanding. I must tell you that an astronaut layer of understanding, a technocrat's level of understanding, a certification or, authorizing the whole system for launch, and that level of understanding, it's all differ. So we are collecting the best brains in this country, including Air Force and various institutions, to come together and help us to build this capability. And there are many countries helping us. Of course, I must tell you that France is helping us in a big manner, especially with the medical aspect of human spaceflight. The doctors who are dealing with astronauts in France came to India. They helped us in training and in creating the basis guidelines. And we are having now engagement with NASA. And they are going to take one of our astronauts in their flight in ISS, which will definitely give us some exposure to the way they handle astronauts and then prepare them before the launch. And all these are very important. So if everything goes very well, I am very sure by 2025 end, we will be able to make the launch. Of course, and we will not make the launch on 2025 if anything goes wrong in the travel towards that point. Like encountering failures, encountering serious design deficiencies. We will have to reset the timeline, of course, because life is very, very important and we don't want to take the risk of causing any injury to any of our astronauts. So we are looking at a manned mission by 2025, ladies and gentlemen. I think so that's the big news now coming in. And I think so at the hands of Mr. Somnath, I would say there was a point in time when the International Space Station, to get a part of it, or to be a part of the International Space Station, India was jostling for it. Today, ladies and gentlemen, the Prime Minister has already announced that we are looking forward to our own International Space Station. Nothing can be more bigger than this. So why not a little bit about the space station that India is looking forward to, and the Atmanirbhar concept to it. I think so, nothing more. No other sector has achieved as much as the Prime Minister would say, Atmanirbharta, as much as it's happening in ISRO. See, I must tell you that after the Chandrayaan-3 successful landing, our Honorable Prime Minister took a review of our program and he was very, very happy with the type of accomplishment that we have in terms of mastering the technology required for soft landing on the moon. And his confidence on us has been so high that he said, so let's have a plan for next 25 years on what you really want to do in the space sector. We have been continuing to build our communication satellites, remote sensing satellite, and various applications, delivery. I think this will continue. That's a regular type of work which is required to be done. But there must be a very, very inspiring, with a and type of program that is more visionary in nature. So this is the first time in the history of ISRO, a 25-year-long roadmap has been developed by the advice of our Honorable Prime Minister. And it has three, four key elements. First thing is the human spaceflight program, which we call Gaganyaan, is going to continue. It's not going to be a one-time event. There is no point in sending an Indian to space and show that, yeah, we have achieved something majestic. But it must really deliver something back. No, we see that access to space by human beings are so crucial for various technology elements. For example, we look at material science, we look at drug discovery, you look at additive manufacturing in humans or organs, or if you want to look at biogenomics domain, microgravity experiments become very, very important. And this requires human beings to be present to organize experiments and do measurements and bring back those samples in a healthy condition for us to analyze in the ground and then give some outcome. So there is hundreds of such experiments taking place in the International Space Station today from various countries. Unfortunately, in India, this domain is still to catch up, and I believe it will really happen. So the goal of the Bharati Antarikshya Station is to connect the human spaceflight program and the demand for new technologies that will come out of the microgravity experiments. And once you have a space station like that, this should be possible for us to send Indian scientists up there and conduct experiments to serve those sectors of the industry. So we believe it's not just going to show that we have an international station like others, but to deliver an economic benefit out of it. The second element is to continue the scientific exploration that we have been doing so far. That's the Chandrayaan series, we did the Mangalyaan, we did the AstroSat. So these are low-cost scientific experiments that we have been able to do and really bring out substantial scientific outcome. So we are now thinking about a series of missions to moon
because moon is a new area where it's emerging in every sector, and the new moon economy is now taking shape all around. And we don't want to be left behind. So this is the second domain of it. The third is the human access to moon and make an Indian land on the moon. And it is an iconic element of the whole of this vision. Why we say it's not just landing a person on the moon. Taking him up to there requires so many technologies need to be developed. For example, our launcher capacity must substantially increase. Today we have only 4 tons to GTO capability. It's not enough. We need to have something like 30, 40 tons of mass lifting to a low Earth orbit capability if you really want to send a human being to moon. And once you do that, once you create that capability, your space station building will automatically happen. Let us understand the connection between these two. So the human access to moon, the higher payload capability, building space station, scientific discovery in and exploring other planets like moon, Mars, Venus, etc. They are all connected in a manner which will improve the technical capability of space sector, which will improve the economic benefit out of it. It will also give opportunity for industries to work in this sector and to have an economic activity in and around the space sector. So this is all connected in a manner that the overall space sector, which is now opened up after the 2020 announcement of the opening of the space sector, will really bring in a lot of activity in this sector. Since you talk about opening up the space sector also, and the kind of presence that we currently have, there was an argument, Mr. Somnath, that if we are opening it up, FDI, in the space sector, then you're essentially looking at more control from the foreign players. Is that a cause of concern, or would you say that this is pure fear-mongering that was essentially done? This comes out of the non-understanding of the economics of space activity. Today the overall space economy is sized approximately $500 billion US. Out of that, almost 70% of the business or the financial activity that is taking place is around the applications, or is around the hardware that are required for the ground operations, connectivity, network, and various other things. Around 15% is for building satellites, and rest is for only rockets and launch vehicles. So the overall economy is driven by application rather than the high-end sort, where the investment is very high, the return of investment is low. The rocket building and launching is not a very profitable business if you are not very good at like SpaceX. The satellite building and launching is the next profitable opportunity, but the bigger profitable venture is in terms of applications. For example, image processing and using communication services, navigation and timing services, weather-related services, etc. So if you really look at these three sectors, the launching sector, the satellite sector, the application sector. So in the FDI, what we have done is the application sector is now 100% automatic. That means whoever wishes to invest in the application sector are welcome to India and then create their capability. So what really means is that in India and in around India, there is so much of markets available to create the possibilities of applications and then generate the activities around it. So when you create an economic activity around the applications, naturally the demand for satellites will increase. And now in the satellite sector, we are not allowing FDI to come automatically up to 100%. So that is regulated. It's only up to 74%. So now the activities on satellites increases, then naturally the demand for launches will increase. And the launcher side, the FDI is limited to only 49%. So the foreign players cannot directly come in and then build rockets here. It's possible only by government route only, where we do the due diligence on who is coming and who are going to be the players. So we have demarcated the sectors very clearly, the launcher sector, the satellite sector, and application sector, and the FDI bounds have been put appropriately so that our interests as a nation are not compromised. I also want to take the opportunity of asking you about Chandrayaan-3, because Chandrayaan-1 threw up the possibility of ice molecules. What is it that the world does not know about the findings of Chandrayaan-3? Mr. Somnath, we do have a habit of getting some breaking news. I'm hoping that you would be able to share with us what the world does not know about the findings of Chandrayaan-3. On the Chandrayaan-3, our target was to land on the southern side of the moon, very closer to the pole. And everybody is interested in the south pole of the moon. I think all of you know why it is so, because that area is not well sunlit, and there is 14 days of day and 15 days of night there. So because of that, the structure of the moon is well preserved there, unlike the equator domain where there is better sunlight, and then the
the possibility of measuring and finding water, minerals, and many other things are much better off in the southern pole than in the equator. So when we went there and did the measurements using the 5 of our instruments, there were many interesting findings. I think the most surprising things are to be kept as a surprise because it's to be done. It is to be done by the scientists, not by me, because there is a set of moon scientists working on this data, and they have some observations, of course, I must tell you, but they have to corroborate with the other findings. There are experiments which are done on the ground and the measurements coming from there. For example, one of the important finding was that there will be huge amount of dust there. But when we went there, we found there is no dust like what we expected to happen in the equator. And you would have seen the rover moving around, and then the clumps of materials were coming out, not in the form of dust. Then there must be a surprising question, why there is no dust there, and why dust was seen in the Apollo landing. I think you all know that we have seen those videos of other landings. There was enough dust, but there is no dust there. The presence of water, which is much more abundant than the equator, or something else that is happening there. We also found that the atmosphere of the moon at that time, though you know that there is no atmosphere there, but there is an electron and a charged particle atmosphere. It's much different from that we expected. So there are surprising things, but for time being, let me not disclose, because it has to come in a peer-reviewed journal, and normally in scientific domain, it's not just announced like a chairman coming and telling you there is something surprising here. So we go through a process of peer review, and people in that domain should certify that what you are speaking is true. And once that is done, we will definitely announce. I'll do grave injustice if I let you go without telling the audience a few things that we generally never know about you. One, the hardship, ladies and gentlemen, that they've all gone through, not just you. I'm sure a lot of people in your team have gone through, but perhaps your story highlights that. There was a point in time, ladies and gentlemen, when Mr. Somnath was hitching a ride all the way to go to Sriharikota, taking the same train, I'm told, and also the fact that living in one tiny lodge room during his engineering days so that he would be able to cut cost and be able to complete his studies, gave up his dream of being part of the IIT. So these are some stories, and he's a great cartoonist and also a singer. I want to ask you this final question. Young minds, and that is what fuels billions of dreams of India, of Bharat. What is it that you would tell the young minds here and to the nation? My finding about meeting young people all around this country, I have been going to schools, especially the schools from villages, wherever I am getting some time to interact. I find very, very active minds. They are not only in those Tier 1 cities or Tier 2 cities, they are everywhere in this country. The only thing that they don't get opportunity to find out what is there in this world. What are the possibilities that each one can dream about? If you can give an element of dream, a possibility of dream in their minds, I think they will work through and then find out their way. The task that we have is today for those people who have had a fortune to expose themselves to the new world emerging in front of them, is to share that with those people who are not having an access to that. Of course, the communication revolution has made the change that now many people are able to see that much better than those in our times. But still, I find the dreaming possibilities are limited by the exposure that young people are not having in those villages and those localities where that type of access is very limited. I want to tell you that when I was a student, I have not seen anybody a higher official in my life, in the whole of the school life, other than a school teacher. I have not seen an engineer in my life when I was a student. I saw an engineer much later when I went to a city. So that should not happen to the new generation. They must see the emerging India. And you must find way to communicate with them and show them there is so much a possibility for any young fellow in this world, girl or boy, to aspire for. If they are good at it, if you are good at studies, good at entrepreneurship, there must be a possibility for him to grow in life. I think this is something that we must show. And I'm very happy the Chandrayaan 3 has shown this example to the Indians. I think if I go to a village, I think they know about it, quite a bit of them. And they are inspired by our work. And they think that it is possible for Indians to do that. And I tell them, hey, look at this Chandrayaan 3. It's done by Indians. It's not a borrowed technology. We have done it all by ourselves in India. And this gives them a great confidence. And I have a photo of a small girl which I met just last week in a school. She was clinging to me and she wants to
she's telling me, I want to be the first woman who will go to moon when you will land on the moon on 2014. And somehow you make it possible for me. You know, she's telling me that. And this is great thing to happen. And if you can inspire people, I think their life will change. And my life changed because I got inspired by people like that. So let us give it back to them. Thank you very much, ladies and gentlemen. Every time that I speak to Mr. Somnath, he always says, the credit does not go to me individually, it goes to the entire team ISRO. So through you, sir, on behalf of everyone and on behalf of Republic Media Network, I would say salute to every scientist of ISRO for doing what you have done and for making Bharat extremely proud. Thank you so much. Thank you for this opportunity. And I think the ISRO is now being looked upon as a torchbearer of the technology prowess that India is having. I think the work that is well laid out for the next 25 years is really challenging for us. And I wish all the very best for the team ISRO. And your blessings are very much needed for the task that is laid in front of us. And we are not going to rest until we achieve some bigger milestone that we achieved. That will map the way Bharat will connect in the next decade. Ladies and gentlemen, the engineer of the quantum leap, Shri Ashwini Vaishnav. Okay. Here we go. Are we going to have this on this one also? Same thing on both screens or? Okay, one only. Perfect. Great. So I'll speak for about 15 minutes. We'll go through very rapidly, through a very quick, basically trying to understand where the tech landscape is today and what we are thinking. That's what we discuss in the next 15 minutes. Friends, you are all aware of the India stack. You are all aware of how our Prime Minister has democratized technology by creating a structure in a public-private partnership where the big tech and the startups, large enterprises and the small entrepreneurs, the rich and the haves, and the low income and the have-nots, they all have access to the same level of technology that we should all aspire for. That kind of inclusive thing was possible because of the India stack, and this stack is growing day by day. I'll come to the conceptual point. How this concept was created. We have seen in many countries, some big tech companies, they monopolize technology. We have also seen another geography where the government does everything. This is a very unique case in India because of our Prime Minister's clear thinking process that neither should we leave our destiny in the hands of a few big tech, nor should government be present everywhere. We should try to create a public-private partnership. So this example you have seen in multiple things, multiple times, but I want to explain the thought process behind it. This platform of UPI has been created by public investment through a public company. To this join the banks, digital identity, about 50 million merchants, hundreds and thousands of startups, e-commerce companies, enterprises, and about 43 crore people, 437 million users today have already joined it. You see the structure. In this structure, anybody can start a payment company today. You want to start a payment company, you can start it today. Because of this structure, the cost of a transaction has come down from about $10 to a few cents. 800-900 रुपए से कुछ 1-2 रुपए पे cost of transaction has come down. And that has made possible a whole lot of services, whole lot of new innovations which were unthinkable in the past. And the spread is amazing. Everywhere, wherever you see the technology, the use of Digital India stack, the DPI is today practically every part of the country. Now I'll come to a point how this combination, how this Digital India stack is today providing multiple solutions. I'll come to the digital credit.
Now digital credit, okay, so when you want to give a credit to somebody, what do you need? You basically need three fundamental things. One, whether the person can repay, what is the repaying capacity? Two, what are the documents that need to be checked? Three, whether the person is actually the person you are talking to, right? Identity. So when we look at this, you look at the right hand side of this. Payment history, the cash flow, transactions, that becomes the collateral if you don't have any other collateral, right? Somebody who doesn't have a property or some gold to put as collateral in loan can today create, using the UPI, a cash flow history, payment history, that becomes the collateral. Use Aadhaar structure for getting the identity verified, totally digital. All document verification can be done on DigiLocker, right? All the three things which are needed, whether a person can pay back or not, whether the person is exactly the person you are talking to, whether the documents can be checked or not. Now comes the account aggregator structure in between. So on this side is the people who can give credit, the loan, and on this side are the people who need a loan, right? A small micro enterprise on the streets of a city, right? चाय बनाने वाला ये व्यक्ति भोपाल का है फोटो, right? देखो आप इसके कितने सारे आगे लगे हुए हैं. ये तो मेरे ख्याल से किसी बड़े अमेरिका के स्टोर में जाओगे तो जैसे दिखता था ना कि वीजा का एक लगेगा, मास्टर का एक लगेगा फोटो, वैसा ही यहाँ पे you can see very clearly there are so many multiple QR codes, पेटीएम का भी, फोन पे का भी, भीम का भी, सबका. That's the power, right? So the account aggregator basically intermediates between the people who need loan and the people who can provide loan. And the fundamental structure is what is the payment history. So UPI gives that, verification is done online, and in a very, very privacy protected method, people who need $10 loan for 3 days are today getting the same access to credit that a big industrialist would be needing $100 million ka loan. So today, because of our Prime Minister's clear focus on democratizing technology, the big industrialist and the small micro entrepreneur, they are equal today. That's the beauty of this structure. And the world over, people are looking at this as the most inclusive example of digital technology. Most inclusive example of digital technology. I'll go to the next point, which is our future, which is where we need to really put our focus and make sure that our future is secure. About semiconductors. Very interesting. The world is today noticing this. June 23, our Prime Minister signs the agreement with the US President for a company called Micron to set up their plant in India. June 20, just mark the dates. Mark the dates. June 23 is when the agreement gets signed and the proposal gets approved. September 23 is when the groundbreaking happens. How many days? Less than 100 days. Less than 100 days. And would you believe this is the level of construction in December 23? That's the pace at which Prime Minister Modi ji's Sankalp for Vikasit Bharat is working on ground, right? This is real data, real pictures on ground, complete plant. Close to 5,000 people are working to construct it at a rapid pace, torrid pace. And today people are giving examples of many other geographies. Announcement is, okay, after 2 years, 3 years, maybe, somewhere the construction will start. No, not in India. And in India, announcement happens within 100 days, construction also starts. I'll talk a little bit about chip designing, chip architecture, the whole value chain, how our Prime Minister has given us a clear mandate that don't look at simply setting up a fab, don't look at simply setting up a plant. Think of the entire value chain and think of a 20-year roadmap. Then only we'll be able to do justice to our country's talent and to our future.
We have close to 3 lakh design engineers. So building upon this, manufacturing is the next logical way. So I'll talk a little bit about how chips are made. So this is sand, right? This sand is molten to make silicon ingots. This is an ingot. This will be cut to make wafers, right? वैसे आलू से सोना बनाने वाले कुछ लोग हैं. On this wafer, you basically apply multiple layers of photoresistors and metals and try to create a structure where exactly what you want to publish gets published, right? Exactly what you print gets printed on. And it's a very, very fine work. Focus is, our Prime Minister's clear vision is, we must create this entire value chain in India. We should not leave ourselves vulnerable to any supply chain shocks in future. So, from getting the ingot done, from getting the wafer manufactured, to getting the wafer fab done, to getting the entire operation in a proper mechanism and getting the final chip done, we are working on practically every aspect of this value chain, right? And today, because of the recent approvals by Prime Minister Modi ji, today we have the complete value chain from chip design to chip fabrication to getting the ATMP done so that it can be converted into a usable module which goes into practically everything, right? So when we look at this, the design, fab, ATMP, below that we are looking at augmenting our talent pool. We are a talent nation. We are a nation which has our own IPR, our own contribution to the world as complete chipset. Along with comes the entire supply ecosystem, which is close to 16,000 items go into making a chip. I was looking at the periodic table. Science wale kaun hai yahan pe? Quite a few, right? Periodic table. Sare ke sare elements are used in this. Practically every element, maybe some of them may be not used, but practically every other element is used in chip making. And this goes into everything that you see here requires a semiconductor, right? This guy would be needing something like 30,000 chips, right? Vande Bharat. This would be looking at something like 3,000 or 4,000 chips. That's the magnitude of semiconductor requirement. We are very fortunate to have a very visionary Prime Minister who has given us a clear mandate of using technology. I gave these 3 examples today to share with you where we are today, what we are thinking in the coming days. In Prime Minister Modi ji's 3rd term, India will emerge as a major product nation, as a major manufacturing hub, and a major technology power. Thank you. I just wanted to say thank you to the Minister. Mr. Minister, we talk about how the country is changing. That we have such a qualified person like you making, it's amazing. The kind of talent that has been brought into the government by the Honorable Prime Minister, but also the honesty, integrity and professionalism. On behalf of Republic Media Network, a legal luminary extraordinaire, Mr. Harish Salve, has shouldered the fight for justice like no other. From lifting the hopes of 1 billion with his fight at ICJ to defending Bharat's cause in the Kulbhushan Jadhav case at The Hague, which saved an Indian from death penalty, Mr. Salve has been the go-to legal luminary for Bharat. Thank you. Thank you very much. Thank you very much. Mr. Salve, I said this, our next session is with the Prime Minister, but I could not have done this day without you. And I want to start by saying thank you to you. All right. And I want to say that if there's one person who has fought for the Republic Media Network, and he's the person, he's the force
He is the mind. When I was in jail, I remember his arguments, and I can only even tell you the policemen, the prison authorities, and everybody inside was also following what Harish Salve was saying in the court. So thank you very much, sir. This is a very emotional moment for me, and I wanted to say thank you. In that lies the hope for this country, that even the common people now have started looking beyond your politicians. Sir, the theme is Bharat the next decade, because we have very limited time today. And that is Bharat the next decade. Beyond the politics of India. Yes, sir. This growing nation, a nation which is now anxiously waiting for its day in the sun. And I think that's where we are headed. Today, when I walk in the streets of London, Sir. It's not, ouch, here comes an Indian, it's wow, here comes an Indian. Wow, that's amazing. So from where you are India's #1 jurist, legal voice, one of the biggest international lawyers. How do you view Bharat the next decade? And from the point of view of jurisprudence and law, what needs to be done to get us there? We need to, mic closes. We need to get our courts in sync with the rest of India. You don't think they are? They are. You cannot run a 21st century India with 19th century mindset courts. And that's what we have. Wow. You believe our courts are not with the times? No, they are not. And I say so because I'm a part of the system. And I say so in a positive sense, not to denigrate or degrade anybody, because that doesn't help. But there is a lot of catching up to do. There is a lot of catching up to do at all levels. Domain expertise has been brought into government. Domain expertise has to be brought into the judicial system. Can you expand on that? So if you have commercial courts, you must have judges who understand commerce. You go blank when you talk of financial services. And that domain expertise has to come so that the lower rung of judiciary is repaired. Our Supreme Court has to go back to being what it was meant to be, the Supreme Court of India, not yet another court of India which pokes its nose in everything. Wow, that's going to make headlines coming from you, Mr. Salve. Rhythm would like to take that forward. It should, because today, unfortunately, the Supreme Court is hearing appeals from amending of pleadings, hearing appeals from every small little case which gets decided that way. You know, I now work in different jurisdictions, India and another jurisdiction. In United Kingdom, 9 out of 10 cases come to an end in the court of first instance. Yeah. We have to get there. Otherwise, this disrepair in our judicial system is not going to get sorted. The common man's interface with justice, you've seen this for yourself. Yes, sir. The common man's interface with justice is first in the criminal justice system with the magistrate, and in the civil justice system with the district judge. And they have to be of fine fettle. Yeah. And when they are of fine fettle, the pressure on your high courts will go down. And then your high courts have to be brought up to mark. The commercial side of the high court, today Delhi High Court has some very good judges, but some very few very good judges. We need a lot more, we need a much wider base. And we have to get back the legal system into a pyramid. Today it's like a rectangular block. Everything goes from floor to floor. That's not how legal systems can work. Right. There has to be a pyramidical structure. Bulk gets sorted out at the lower level, a much smaller at mid, and right at the top, important questions Very of few. law. Rhythm. Mr. Salve, simple question. The sedition law, whether it's the privilege of breach. हर सिचुएशन में हंसाएंगे, मैडनेस मचाएंगे। मेरे पिताजी आपके अरबाज भाई बहुत बड़े फैन हैं। कहते हैं अरबाज भाई से कुछ सीखो आप। मैंने कहा क्या सीखना, कह रहे उन्होंने शादी कर ली, आप भी कर लो। तो मैंने कहा पापा उन्होंने जिस उम्र में करी है आपको सीखना चाहिए। बेंचमार्क सेट कर रहे हैं, ठीक है? सबके लिए स्कोप रखा है। मैडनेस मचाएंगे 9 मार्च से शनिवार रविवार रात 9:30 बजे सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन पर। That this narrative that continues to be created in the courts needs to stop, and what's going to get these vested interests to stop? Whose constitution under threat? The constitution of certain political parties or the constitution of India? Yes. I don't see any threat to the constitution of India. Till constitution of India lives in our hearts,
Nobody can kill it, not the politicians, not the judges. It is India which is spirited. Who brought India out of emergency? Not the courts. The courts succumbed. It's the people of India who brought India out of emergency. Mrs. Gandhi realized she cannot continue this nonsense anymore. And that spirit has to continue till we have democracy in our heart. Today, I have seen the change in the political system. You have seen it, I have seen it. India has transitioned from and I don't mean this derisively, India has transitioned from an English-speaking public school culture to sons of the soil running the country, and running it very differently. Well said, sir. I say something. Speaking for myself, I would not be able to work if the courts went into Hindi. But should it be done? I don't see any reason why not. So, and I'm not being populist. The point is, India has to be run by Indians. People respect us now because they feel India is being run by Indians. Yes, sir. Sir, just one question before I ask Arnab to ask you a question. You've spoken about the word nepotism. You've spoken about your father was in the Congress and yet you chose to be a Solicitor General in the Vajpayee government. How did that work? One question. Second, diplomatically, we've seen the Jadhav case that you won. I also want to know today, when we get diplomatic victory in the Navy officers who've now been brought back, how is this system in India really going to be seen? See, it's always, today I don't think you see any real nepotism. And it's only, hopefully, it's in the fossils of history that it has now been put away. I don't think any appointments in recent times you can point a finger and say so-and-so's nephew or so-and-so's uncle has been made. When I was to be made Solicitor General of India by the Vajpayee government, it mattered little to Vajpayee that my father was a member of parliament in the opposition party. And that's the mindset which they have to get. If you want talent, you can't hold people to silly ideas like of their ideology or their parents' ideology or their uncle's ideology. Family should become irrelevant to your movement in life. The second is, how are we seen today? Today we are seen as a powerhouse. Today India is seen as a powerhouse. And the world, look at the United Kingdom, the economy is in shambles and there is no hope in sight. Today they are most worried about their wobbly political system. We don't know the next elections. Will Labour win? If it wins, will it win a clear majority? Right. Or are they going to be in this mess and in the meanwhile everything dwindles? People in England today worry about heating their homes in winter. And they call themselves a developed country. So, believe me, I mean, the infrastructure in United Kingdom is in shambles, absolute shambles. And look at us, we are changing by the day. Yes, so, sir. India is seen as a powerhouse and India is a powerhouse. Yeah. And it's about time we showed the world we are one. I just have a couple of minutes because the Prime Minister is coming and the security clearance. But I must ask, do you agree with the collegium system? In Bharat, the next decade, should the system of judges selecting and electing judges continue to be? I really want you to speak straight on this, sir. It should never have been, and it should certainly not be. The collegium system was a band-aid on a wound. The political system at that time had started completely destroying the judicial appointment process by deviating from convention. Believe me, some of our finest judges came from appointments by the government. Where did Chinnappa Reddy come from? Where did D. Desai come from? Where did the great Krishna Iyer, the jurist, come from? Krishna Iyer was a communist from Kerala. He was in the communist government. He was made one of the finest judges ever. Who appointed him? Government of India. Are you willing to engage in a public debate with CJI D.Y. Chandrachud on this? What is there to debate? Show me one country in the world where judges appoint judges. And show me one authority, one sociological research which says if judges don't appoint judges, the independence of judiciary is compromised. Incredible. Today I'm getting a lot of headlines from this spot. No, I've always said this. Wow. Let me take that. I don't agree you are also on the committee on One Nation, One Election. Yes. Therefore, you are advising on whether we can have all state and government elections together. Will we see it happen? The committee is not me. The committee, you. But will we see it happen, or is it going to be deferred and deferred? Because I would like to comment. But would it happen? Would you like to see it happen? Well, let's see. Can 2029 be a simultaneous election for states and centre? You'll know the report will be
made public shortly. By when? Shortly. When shortly? Shortly. Quite short. Quite short, but possible, in the realm of possibility. No, I don't want to comment. I don't Okay. want to. One last one, Rhythm, and then we have to. Sir, exactly what Arnab was asking you. This is something we're very fond of. We want to know whether there'll be simultaneous elections, but also shifting away from here. You're now living in the UK, a lighter question, a piano-playing lawyer, someone who should actually be called here to play the piano for us once upon a time. How are you, other than this, looking at your work? Do you think the Indian courts and the way they're working virtually is there to stay? See, A lot of I'll people tell you. miss him here as well. No, I should tell you the basic difference, and I put it in one sentence. You have to start working by a calendar and a diary. You have to stop working in a way where this is the problem with the Indian mindset. Your time is valuable, everybody else's time is hopeless. So a judge will fix your case and make you wait till 4 o'clock. Unheard of. I knew 2 months ago that on 11th, Monday at 10 a.m., I'm appearing for the Enforcement Directorate in the High Court, Chancery Division, against Narendra Modi. I knew that 2 months ago. Yeah. So that's how the system works. And the case is fixed, the time is fixed, you go to the court, either somebody drops dead or the case settles or the case goes on. So the extradition is going to happen? This is not the extradition, this is attachment of But some do you properties. think for Malia and for Narendra? Extradition has been allowed in both the Yes, cases. yes. It is waiting for a political sign-off. Well, we feel so proud when we see you arguing at The Hague, and we feel so inspired. I have one last question. You'll see me now arguing in the European Court of Justice for the athletes. Wow. You know, the athletes against whom they've said where their testosterone levels are high, that's Semenya. Yes. And others. And we challenge it on the ground that that is discriminatory Yeah. because gender has to be binary. You cannot create a third. Yeah. We had success in the first round, but let's see. Well, I mean, even all the judges wait for your every word when you're speaking. Your stature is incredible. But I have one last question. How do you say thank you to someone who has taken you out of jail? By staying out of it. No. No. Don't do anything No. which puts you back there. No, you never know who puts me back. I'm going to call you. And I'll tell you how you can do that. You have to give me a hug on stage for that. Thank That you. I will, happily. We do about 4x more digital payments than what China does. This is the first time that India is setting the agenda, and you're getting other peoples to comment on it. And the Prime Minister is really exercising leadership on that, on how to steer the world together on several issues. Ladies and gentlemen, please welcome the global synergist, Mr. Amitabh Kant. Good afternoon, ladies and gentlemen. I'm truly delighted to be here at the Republic Summit. If you look at the last decade of India's growth, there's been both a great rise in the hard power of India and the soft power of India. During India's G20 presidency, and G20 is important because it accounts for about 85% of the global GDP. It accounts for almost 80% of the global trade. And it accounts for almost 75% of the global population. During India's G20 presidency, not only India did it very differently from the rest of the world. Other countries hold it in one city or two cities at the best. India
hosted a G20 in every state and union territory of India, and held it in almost 60 cities of India, and used that opportunity to transform these cities by improving its drainage, sewage, solid waste. But more important than that, India straddled through the world of G7, all the emerging markets, Russia, China, and bring them all together on all key issues confronting the world. Whether it was strong, sustainable, inclusive, and balanced growth, whether it was accelerating the pace of sustainable development goals in the post-COVID era, whether it was a green development pact for climate action and climate finance, or whether it was reform of the multilateral financial institution, or technological transformation and digital public infrastructure, or women-led development, in all these issues. And there were 83 paras in all. 83 paras. India was able to bring consensus on all these issues for the first time in G20. On all these issues. And more important than that, we were confronted with a very major challenge of an ongoing Russia-Ukraine war, where United Nations had failed. The G20 of India succeeded in bringing consensus on the issue of Russia-Ukraine. This was unparalleled, and this could happen because of India's hard power and soft power built during the last decade, and because of the stature and standing of the Prime Minister, Mr. Narendra Modi. We could take a lot of risk, we could be gutsy, we could be bold, we could be courageous, largely on account of this leadership. And it's important to dwell a little bit on this, because if you look at the last decade, India has carried out a vast range of structural reforms in its economy. It's brought in GST, one tax across the economy, is brought in a modern bankruptcy law, is brought in the Real Estate Regulation Act to save middle class of India, is brought in the finest corporate tax rates, it's focused on ease of doing business, and scrapped a vast range of rules, regulation, procedures, and processes, and scrapped almost 1,500 laws. The structural reforms were accompanied by digital transformation of India. 1.4 billion digital identities, 550 million bank accounts were opened during 2015-17. When we started opening bank accounts in 2015, only 18% of the women in India had bank accounts. Today, 91% of the women have bank accounts in India. This has not happened anywhere else in the world. And then we linked up both the digital identity and the mobile number, which enabled us to do fast payments. Today, we are the world's #1 in real-time fast payments in the world. We do 46% of the real-time fast payments. Last year, we did 128 billion fast payments in the world. China was second with 26 billion fast payments. That was the difference. From 128 billion India, China 26 billion. And then we had a number of our startups doing cashless, paperless credit, number of young startups doing wealth creation by taking stock market to rural areas, tier 2, tier 3 cities, a number of startups giving insurance in 1 minute flat on the basis of your mobile. So fast payments in 30 seconds, wealth creation in 30 seconds, and digital insurance in 1 minute.
That has been the transformation of India. And this is all open source, open API. This is globally interoperable. And unlike the rest of the world, where data is monopolized by the big tech, Amazon, Google, Facebook, and Amazon in India, and in China by Tencent and Alibaba, in India, the data is owned by the citizens of India. And they give permission which is technically made possible by their consent on the mobile, on the go. So our model during G20 was accepted as the best model in the world, the definition of digital public infrastructure, and the framework was accepted. And today we've taken it to 20 countries of the world, and tomorrow we'll take it to the rest of the world, because 4 billion people of the world do not have a digital identity. 2.5 billion people do not have a bank account. 133 countries in the world do not have fast payments. So India's model will be taken to the rest of the world to transform the world. And that is why During COVID, we could do 2.2 billion COVID vaccination, and we could, instead of giving large packages, we could put money straight into the bank account of these beneficiaries. Whereas in the United States of America, 9 million checks came back, and Germany struggled for 18 months to create digital identities. So ladies and gentlemen, structural reforms, digital identity, and the third was in infrastructure, the push towards infrastructure. Creation of 40 million houses, of 110 million toilets, of 30 million electric connections to households, of 253 million piped water connection, and almost 80,000 kilometers of road. That's been the story of infrastructure creation in India. And that's why the Bank of International Settlement said that what India has achieved in 9 years would have taken India 50 years to achieve in the normal course. Instead of 50 years, we could do it in 9 years. And therefore, this infrastructure creation the government was able to do because it took its spending of capital expenditure for 1%, from 1% in 2014 to 4% till in the last budget. And this shows government's determination to create world-class infrastructure. And the fourth key point is what India has done for climate action and to build a sustainable and a clean India. We have not contributed to greenhouse gas emissions in the world. Our CO2 emission is only 1.3%. Our total emission is 1/10 of the United States of America. But as a responsible nation, India took over the responsibility and created 187 gigawatts of renewable energy. We are the only G20 country to achieve its NDC targets 9 years ahead of schedule. And we've done it at record low prices. We brought down the price of renewable from 21 rupees to less than 2 rupees. In addition to this, we were able to provide over 110 million of our women cooking gas connections so that they need not burn firewood. We could provide 30 million households electric connection. And now we are moving towards green hydrogen so that we can green up all the hard-to-abate sectors of steel, cement, refinery, fertilizer. And instead of being a fossil fuel importing country where we import 180 billion worth of fossil fuel, by the time we become 147, we should be an energy exporting country of exporting green hydrogen or in its liquid form ammonia to the rest of the world. So from an importer of energy to an exporter of energy is our plan. Ladies and gentlemen, what we've achieved
in terms of structural reforms, in terms of digital identity, in terms of climate action, and all these have been done with speed. And the focus has constantly been on implementation, implementation, and implementation. So this has enabled us to build our hard power and our soft power. And ladies and gentlemen, it's important that as India accelerates the pace of its growth in its Amrit Kal period and accelerates it to the growth of 8 to 9%, because India is the only country which is growing at 8% plus in the last 3 quarters of its economy, and as it accelerates the pace on the basis of these transformations, India is heading to be the 3rd largest economy in the world in the next 5 years, surpassing Japan and Germany, and will be a $35 trillion economy by the time it becomes 147. And that would mean that if we would have raised the per capita income of every single individual from $2,500